This country focuses on missiles coming from left, right, and center. But if you don't have a shelter, you're screwed because then you have to run to the shelter because you have less than 15 seconds to run to the shelter. और ballistic missile हो तो और भी उसका impact like धूप 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 धूप. और अभी तो cluster bombs आ रहे हैं धूप 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 धूप. And I'm like, oh my god, यहाँ पे गिरना नहीं चाहिए, यहाँ पे गिरना नहीं चाहिए. The people who actually belong to minority community, are they safe or not? For Yeah, both men and it's not women. like कि भाई तुम लड़की हो तो तुम्हें माफ है. नहीं. When you see people getting murdered, getting raped, putting small babies in oven, you are only competing with yourself. You need external validation. One message to all the Jewish people listening to you. I think we're just easy to blame because if you go back in history, Jews were blamed for everything. Minority, when I say actual minorities, because 80,000 is really. Let me clear that. 80,000 in Israel. India में सिर्फ 4,000 बचे. This country focuses on preserving its culture as well. Israel में थोड़ा सा अलग है. You have to serve the army. But India was one place where Jews found solace. मैं खुल के बोलती हूँ सबको यहाँ पे कि मैं भारत से हूँ. कभी कभी जिंदगी सिर्फ सफर नहीं होती, बल्कि दो दुनियाओं के बीच एक खूबसूरत पल बन जाती है. और आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसी ही कहानी हमारी गेस्ट बनकर आई है. सोचिए, मुंबई की गलियों की खुशबू, इंडियन तहजीब की गर्माहट और उसी दिल में बसी है जूइश रूट्स की गहराइयाँ. ये कहानी है दो कल्चर्स की. बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई इन अ जूइश फैमिली. घर सिर्फ जगह से नहीं बनता, रिश्तों और यादों से भी बनता है. और रविताल ने दोनों देशों को अपने दिल में संभाल कर रखा है. आज के डिजिटल जमाने में जहां लोग अक्सर डिवाइड की बातें करते हैं, रविताल कनेक्ट करने का काम करती हैं. उनका कंटेंट सिर्फ वीडियोस नहीं है, बल्कि एक महसूस होने वाली कहानी है जहां इंडिया और जूइश कल्चर एक साथ खड़े हुए दिखते हैं. उनकी आवाज में मुंबई की मिठास है और उनकी सोच में इजराइल की गहराइयाँ. तो आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ एक जर्नी को नहीं सुनेंगे, हम महसूस करेंगे एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि पहचान सिर्फ एक नहीं होती, कभी कभी वो दो जमीनों का संगम भी हो सकती है. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल से स्वागत कीजिए मेरे साथ रविताल मोजेस का ब्रिशा संवाद पर. थैंक यू सो मच. हिंदी में इतना अच्छा इंट्रो मैंने कभी नहीं सुना था. सो थैंक यू. थैंक यू फॉर दीज काइंड वर्ड्स. रविताल, आई एम वेरी ऑनर्ड और मुझे बहुत खुशी है कि यू सेड यस टू अस, स्पेशली इन सच सिचुएशन विच इज़ रनिंग इन द वर्ल्ड, है ना. ये मैं इस बात को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करती हूँ कि अभी बहुत टिपिकल सिचुएशंस चल रही हैं. आपने उस बीच मेरे लिए इस ब्रिशा संवाद पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. हम बोलते हैं ना, इजराइल में कुछ रुकता नहीं है, तो इवन व्हेन इट्स रेनिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, बिटवीन द सायरन्स एंड missiles, we are trying to do as much as possible. So it's an honor and thank you for the invite. I'm so happy to have this conversation. थैंक यू. पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग. और मुझे लगता है कोई भी आपसे नॉर्मली भी मिलता होगा तो मुझे लगता है सबसे पहले तो यूनिक नेम के पीछे का मीनिंग जानना चाहता है. और व्हाट डज दिस मीन? रविताल, हाउ डू यू प्रोनाउंस फर्स्ट ऑफ ऑल? Okay, so this is a very this is a great question I want to tell you because बहुत सारे लोग, this is also an icebreaker for me because मेरा जो spelling है ना, it sounds like Revital. आपको तो पता ही होगा the tablet that is sold, Revital. तो मुझे बचपन में भर के. हाँ जी, जियो भर के. This was my tagline when I used to walk in school. People used to sing that jingle. But there is meaning to this name and I'll tell you what. So Ravital is actually a Hebrew name, an Israeli name. It is as common as Aishwarya or Priyanka in India, but in Israel. Okay, so I call it is the Aishwarya or the Priyanka of Israel, this name. And the story goes, my family wanted to name me after my great grandmother Rebecca, but मेरी जो मॉम है उन्होंने बोला कि let's to keep my great grandmother's honor, let's name her with the letter R, but Rebecca नहीं रखते, because if you name people or like your kids after somebody from your family who's passed away, you also carry the good and the bad of their fortune, and she wanted to give me my own fortune.
So to honor her, she kept my name with R. But अगर आप ये नाम को split करोगे ना, Ravi and Tal. Ravi means morning. I was born in the morning. And Tal means rhythm, right, in Hindi. Rhythm. And I was I'm till today fond of dancing and music. I'm very good at that. Yeah. And Ravi Tal in Hebrew means morning dew. जो दव होता है ना, on leaves and flowers in the morning. तो उसको Ravi Tal बोलते हैं. So my parents thought this very was deep actually. Hanji. So they thought this could be the best name for me. And the spelling, I was like, why did you keep the spelling as R-E? R-A rakhna chahiye na, if the pronunciation is Ravital. Ravital, yeah. He's like, no, it says revitalize. So your energy is like high frequency wala. So I've gotten a lot of compliments from people saying that your energy is super high. You feel very positive around you. You're a good person to have around. So I was like, oh my God, like, you know, as simple as your name can manifest into your personality. Yes. Truly, I believe to that. And you know what? Even I was not knowing the Hebrew meaning. Obviously, I could assume what does that mean. But आपकी personality जो मैं YouTube से catch कर रही थी, मुझे तो पूरा मेरे husband ने मुझसे थोड़ी देर पहले ही पूछा कि what does this name means? I said the same meaning what you said now. Okay. That I don't know, but to me it feels like she has that revitalizing energy every time. जिसके आगे रहने पे बहुत फ्रेश फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये अपनी बंदी है, इजराइल में बैठी है एंड शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क्स, पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन दैट. तो आई फील दैट मीनिंग. बाकी हिब्रू मीनिंग तो अभी आपने बता ही दिया. आई थिंक माय मदर वुड बी वेरी हैप्पी टू something- नो कि आपने वो कैच करा. No, she should be happy for actually ample of reasons you are carrying with you. But tell me something about yourself. You were born and brought up in Mumbai and then now you are living in Israel. How did that happen? वो journey थोड़ा सा बताओ मुझे. Okay, so let me wow, this is way back. So मुझे थोड़ा सा ऐसा have to reverse. So I'm actually born and raised in a city called Thane, which is about 30 kilometers from Mumbai. But Mumbai में ही पले बड़े because a lot of the Indian Jewish communities, they live in cities of Thane and Mumbai. तो आना जाना रहता था. And my MBA actually happened in Narsi Munji. So I was like also in Mumbai, stuff like that. Born and raised in an Indian Jewish family. Grew up with Indian and Jewish education at home. I've always wanted to be a professional dancer, but you know, it wasn't very well accepted at the time. So I was strongly encouraged to take something that is going to pay well and I also enjoy. So I ended up doing pharmacy because I loved the combination of chemistry and biology. And then I ended up doing my MBA. And then MBA के first year में my parents break the news कि हम Israel जा रहे हैं. I'm like, randomly Israel जा रहे हैं मतलब क्या? Like, what do you mean we just go to Israel? I mean, of course, I've been to Israel. I came on a trip for young adults. It's called Taglit. So if you're born Jewish, or let's say if one of your parents is Jewish, Israel sponsors a 10-day trip for Jewish kids to come to Israel and experience what Israel is. And then it's up to you कि भाई तुम्हें इधर आना है कि नहीं. ठीक है? So when I came here, but they provide you this good opportunity. Hanji. To know your roots better, in a better way. Yes, exactly. Because, you know, because Israel, or let's say Jewish people think that it is your birthright to come and visit Israel once in your lifetime, even if you don't want to live here. This is like our homeland, right? Because हम diaspora में रह रहे थे. But if you're Jewish, come to the Holy Land एक बार, at least. So that was like Taglit. But then when I came on the trip, मेरा 10 दिन का जो trip था वो सही था, but I extended my trip. So my extended trip, I did not really have a good experience. And I was like, I am never going to come to this country or live in this country. Well, guess what? Never say never. Because I ended up coming here and now live here. So again, going back to when my parents broke that news to me, मेरे side से तो बहुत resistance था. Because I was like,
why? India में तो सब अच्छा चल रहा है. Why would you want to leave everything and go to Israel, start from scratch? But I was like, you know what? 20s is the time, because I was 25 at the time when I actually came here. So 20s is the time for me to experiment and see what works and what doesn't. नहीं चला तो वापस चले जाएंगे, उसमें क्या. Right. So I came. नहीं वर्कआउट करता है तो you always have that option of going back and start it. Yes. So matlab, I could always come back to India. I have a safety net, and you know the Indians have always embraced the Jewish community with open arms. So I didn't even like think for a second कि भाई मैं वापस कैसे जाऊँ. So anyway, we ended up coming here. हमारा जो आलिया process बोलते हैं, आलिया, the term आलिया means to level up. So if as a Jewish person, if you're coming to Israel, it's like you're leveling up your life. तो उसको आलिया बोलते हैं. So me and my family made Aliyah then, and the timing happened to be during COVID. Planned नहीं था, it just coincidentally happened to be just before the lockdown in Israel. Okay, and when was it? Can I ask the month? Because in India it was in March somewhere. हाँ, मार्च के टाइम ही था, 2020 मार्च के अराउंड. Okay. तभी हुआ था. और ये कोविड तो वैसे भी बहुत अचानक वाली न्यूज़ थी. Nobody knew. हाँ, nobody knew. और कैसे हुआ था ना, हमारे फ्लाइट पे एक बंदे को हुआ था कोविड, so we had to quarantine. We had to go into quarantine. Use say whatever, but you know what I mean. Yeah. We had to be in isolation, and I was going crazy. I was like, मुझे पहली फ्लाइट पकड़ के मुझे वापस जाना है. I don't think I'll be able to live here. But then, you know, everything shut down. The airspace shut down. You can't really go anywhere. You can't meet people. And I had to endure. We all had to endure that time of living here in isolation. And जगह नई, language नया, लोग नए, मतलब एकदम से तुम culture, everything. फिश आउट ऑफ वाटर वाला सिचुएशन हो गया था हमारे लिए, और मेरे लिए तो खासकर ज्यादा, बिकॉज आई वाज रेजिस्टिंग कमिंग हियर. तो और एम्पलीफाई हो गया जो मेरे फीलिंग्स थे टुवर्ड्स व्हाई डिड आई टेक दिस स्टेप. आई वाज अ लिटिल मोर फ्रस्ट्रेटेड. वैलिडेशन ज्यादा मिलते जा रहा था हर दिन की, यार मे बी आई शुडंट हैव कम हियर. या लाइक मे बी दिस वाज अ रॉन्ग स्टेप, लाइक मे बी आई शुड जस्ट गो बैक. But anyway, I ended up, we endured and we ended up, and slowly this place started to grow on me. In some ways or the others. Of course, the cultures are very different, but they're also very similar. We'll talk about it आगे जाके. And then देखते देखते I started to learn Hebrew. I started to make more friends. I found my first job. जब तुम्हारा एक यहाँ पे foundation set होता है ना, then you start feeling like कि भाई यहाँ पे कुछ हो सकता है. That's exactly what started to happen. And then later on, I decided कि why not? Okay, I've always wanted to be a YouTuber. जब से आपको पता है वो Matt Stefanina and all these OG creators were creating content, तब से मुझे बनाना था, but मुझे पता नहीं था कि कौन से टॉपिक पे ना बनाऊं. ठीक है. And then I came here. Indian Jews. Oh, sounds like an interesting topic, but who is going to be my audience? Is it going to be the Indian Jews? Is it going to be Indians? Is it going to be Israelis? ये मुझे कुछ भी idea था नहीं, but I was like, you know what? Let's test it. What's the worst that could happen? Views नहीं आएंगे, कोई subscribe नहीं करेगा, matter खत्म, move on. But I had to give it a try. So ऐसे करते करते I made my first video, and then तब पता लगा कि कितनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और चैनल यू नो कंसिस्टेंट रखने में. एंड ऐसे करते करते मैंने 2 बार छोड़ ही दिया था यूट्यूब चैनल मेरा, बिकॉज आई वाज लाइक, मतलब आई डोंट नो, नोबडी इज वाचिंग, नोबडी इज रियली शेयरिंग माय वीडियोस, इट जस्ट सीम्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम. बट फॉर सम रीजन इट केप्ट कमिंग बैक टू मी, एंड देन आई स्टार्टेड टू मेक मोर वीडियोस. आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, let's do this. I started to test video vlogs से चालू करे थे, then I started to do cooking videos, then I started to do talking head videos, then I started to interview people. ऐसे करते करते I started to see there are certain videos that do really well, and I realized that Indians wanted to learn more about Israelis or the Jewish culture, and Israelis wanted to learn more about the Indian culture. So I started to make more content on what are the similarities, what are the differences, when you travel to India, what could Israelis do, reasons for Indians to travel to Israel, why not, and then started to, you know, bring more personalities in the India-Israel space.
राइट, और वो ब्रिज का काम होने लगा. हाँ जी, You actually started acting as a bridge between two communities, two cultures, and that I would say in a very positive way bring more close these people. I mean, जैसे for example me, मैंने आपका content सच बोलूँ तो सुनना क्यों शुरू किया था, because I came across your profile for the first time in just I would say 3 weeks back. okay. बट पहले तो मैं सिर्फ सुन ही रही थी आपको. आई Hmm. नेवर थॉट ऑफ इवन कॉन्टेक्टिंग यू कि यार आई शुड कॉन्टेक्ट यू. मुझे लगा, मेरी सच बोलूँ तो मुझे लगा इट्स आउट ऑफ रीच, है ना. बट देन आई स्टार्टेड वॉचिंग एंड देन आई कनेक्टेड विथ यू. आई डोंट नो, इट डिडंट फेल्ट लाइक शी इज समवन हु आई डोंट नो पर्सनली. मुझे लगा यार इनको ऐसा लगता है, इसको तो मैं जानती हूँ, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट वर्क, है ना. अपनी ही बंदी है वहाँ बैठी है एंड शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड एंगल्स. एंड देन इट क्लिक्ड मी, okay, let me just give it a try. Hmm. क्या होगा, क्या होगा? She will say no, that's okay. In some near future time I would again try कि यार ऐसा, are you okay for the podcast now. But मुझे लगा कि यार ये बहुत the content which you chose, यार, people are talking about divide, which I told you. People are very much interested in knowing how communities are divided, है ना. ये सब तो बहुत बहुत ही rigorously लोग बात कर रहे हैं, लोग practice भी कर ही रहे हैं. But you are behaving and you are actually trying to bridge that gap between two cultures in a very positive way, which is very appreciating, Revita. थैंक यू. मुझे लगा कि मतलब व्हाई नॉट, इंडियंस एंड इजरायलीज फाउंडेशनली मे बी दे मस्ट बी वेरी डिफरेंट, बट कल्चरली काफी सेम भी है. And I'm like, this would be a missed opportunity if there's no friendship. I know the governments are, you know, strategically aligned and stuff like that, but I believe in more people to people connection और ज़्यादा हो सकता है. Yes, of course, of course. तो जब आप वहाँ शिफ्ट हुए थे तो you already had a family, so तो सब कुछ सेटअप था आपका, या your father and your whole family, actually your family started from scratch? हाँ जी. हाँ, तो कैसा होता है ना यहाँ पे, the good thing about the I wouldn't say the government, but the system, the Israeli system is, when a Jew decides to make Aliyah, they are given a certain stipend to start from Okay. scratch. और आपको एक रहने के लिए जगह मिलती है, तुम उसके लिए रेंट भी पे करते हो, बट सब्सिडाइज रेट्स पे होता है. Okay, okay. And then you get Hebrew classes for free. That is completely free. And you can get 2 rounds. So pehla round is for 5 months and you do it for 5 days, 5 hours a day. Rigorous. 5 hours a day. Okay, हाँ जी. full time classes. हाँ, मतलब full time classes होती हैं, because they want to immerse you in Hebrew classes, because यहाँ पे तेल अवीव छोड़ के तुम कहीं भी जाओ, सब Hebrew ही बात करते हैं. And if you want to, you know, have a life here, be, you know, have a career, or want to date an Israeli, I think it's very important to learn Hebrew. Right. It makes sense also ना, वो country में रह के वहाँ की language सीखना, it makes sense also. हाँ जी, और Hebrew was also a dead language. So, and then there was somebody who brought it back, and then all of a sudden everybody was speaking Hebrew. So, this country focuses on preserving its culture as well. So, we need to respect that. Yes. Yes. And also yes. it's an asset कि भाई you can learn another language. Why not? अगर मतलब if they are willing to pay for your classes, and you know, the least you could do is sit in class and learn. It's not so bad. Although my brain wasn't meant to learn a new language. This I realized very soon. But it comes with practice. Like my Hebrew right now is much better than what it was 5 to 6 years ago. Before. क्योंकि तुम And what about the job opportunity? Do you also, the government also provide the job opportunity? Okay, so that is a bit different. तो जहाँ पे तुम रहते हो ना, वहाँ पे they have an office where they help you with let's say employer connections, or at least get you an interview, but it's totally up to you कि तुम्हें कहाँ पे करना है. अगर तुम्हें टेक में काम करना है तो it is probably not the best way to find a job. अगर टेक में जाना है तो you need to, I think, number one, try and build those connections through LinkedIn. Go to these meet and greets at tech companies. Tech में थोड़ा सा, I wouldn't say it's difficult. I mean, if you're a software engineer or if you're in cybersecurity, your life is set in this country because it's really good. But if you are in a tech adjacent position, like for example, अगर तुम graphic designer हो या marketing कर रहे हो, it is not like hardcore tech, it's tech adjacent.
right, in a tech company. तो फिर मुश्किल है कि those are a little more competitive, क्योंकि सब लोग मार्केटिंग कर रहे हैं आजकल, या सबको ही ग्राफिक डिजाइन आ रहा है, करेक्ट. तो तुम्हारा नीश क्या है डिपेंड्स कि तुम कितना जल्दी वो इसमें जा सकते हो. जितना आपका डोमेन बेस्ड काम है, देन यू विल हैव फेयर अपॉर्चुनिटी टू राइज. और करेक्ट. अगर जितना जेनेरिक जैसे जो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, मे बी देन यू कैन फेस सम challenges. If there are traditional जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन या कौन सा वाला, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, उसमें तो 100% यू गोना नीड हिब्रू. सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू गो इन टेक, तो भाई मतलब हिब्रू सीखो and then try and get a job. Like it is cutthroat. I wouldn't say cutthroat, but it's tough. वो तुम्हारी mental tenacity होनी चाहिए. It is tough language? It is a tough language. Is it a tough language or? क्योंकि इसमें masculine, feminine भी होता है. Like the way you address. Table is shulkhan. So shulkhan is masculine. Okay. Ma'alit. It happens in Hindi as well. Right? That's what I'm saying, because it's feminine and masculine. It is a little bit hard to remember, right. Also. जैसे अपन किसी चीजों में हिंदी में भी बोलते हैं ना, जिसको फीमेल की तरह यूज करते हैं. हाँ जी. जैसे बाय डिफॉल्ट इट डजंट मेक सेंस, मतलब वो है तो चीज ही कोई ऑब्जेक्ट है, बट देन यू ट्रीट दैट ऑब्जेक्ट एज फीमेल और मेल. करेक्ट. एड्रेस करते टाइम, मतलब इफ यू आर, यू नो, फॉर कॉन्टेक्स्ट एड्रेस करते टाइम वैसे. But it comes over time. But also, again, it also depends when you make Aliyah. If you're a little bit older, it is much more difficult. If you're younger, then it is mandatory to do the IDF service here, the Israeli Defense Forces. My sister had to do it, so her Hebrew is the best, because वहाँ पे तुम्हें Hebrew में men and women both. Yeah, it is. For both men and women. It's not like कि भाई तुम लड़की हो तो तुम्हें माफ है. नहीं. If doesn't matter. Both men and women have to serve the army here. So she did the army for almost 2 years. So her Hebrew is better than the three of us, because she learnt it, and 2 साल rigorous, मतलब Hebrew में commands and this and that and work and all of that. So it just, I think they have an upper hand. Anybody who does Aliyah and then goes to the army, they also like get an opportunity to serve the country. And also learn the language, and also learn the Israeli culture like hardcore. Yeah, that makes sense. तो ये उसका कुछ time frame है age gap में, मतलब कि इतने age से इतने age तक अगर आप हो, then you will have to serve that compulsorily, ऐसा कुछ है? हाँ जी. So if you are between the age of 18 to 24, आपको serve करनी होती है. If you're born and raised in this country, तो by default, when you turn 18, मतलब you get a letter from the IDF कि भाई तुम्हें अब आना पड़ेगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स कैसे कोप अप करते हैं? अपना एजुकेशन भी साथ में करते हैं और फिर सर्विसेज में भी जाते हैं, कैसे होता है? ओके, ग्रेट क्वेश्चन. सो ओके, अभी इंडिया में वी आर रेस्ड टू हैव अ करियर, राइट? भाई पढ़ाई करो एंड देन सी व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट यू वांट टू टेक अप. इजराइल में थोड़ा सा अलग है. द टाइम यू टर्न 18, यू हैव टू सर्व द आर्मी. फिर तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें एक्सटेंड करके फिर पढ़ाई भी करनी है साथ में, और यू कुड गो बैक टू योर सिविलियन लाइफ एंड देन डू योर बैचलर्स. ओह! ये बात मुझे नहीं पता थी, एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी व्हाट आई वुड से, मतलब ये बहुत ही न्यू चीज़ मुझे पता चली है कि माइंडसेट ही डिफरेंट है. हमारे यहाँ क्या होता है ना, मतलब 18 तक आपका एक सर्टेन एज ग्रुप तक ये चलेगा, देन यू विल हैव कॉलेज, देन यू विल हैव इंटरव्यूज, देन यू विल डू द जॉब, इफ यू वांट टू डू MBA, मतलब एक सीरीज ऑफ एक्शन है करियर की पूरी. लेकिन यहाँ पे आपका माइंडसेट ही बना देते हैं कि नो, यू विल हैव टू सर्व द आर्मी एंड देन इट्स योर चॉइस if you want to go back to civilian life, or and if you want to continue the military life, then also, I mean, the defense services, you can also do that, right? Yes. So like some people sign for a longer time and they serve for like about 6 to 10 years even. What some people do is वो 5 साल का लेते हैं. हमें पता है वो डिप्लोमा, no, we used to do like diploma in India, कि तुम instead of doing in 4 years, you can do it in like, instead of doing in 6 years, you can do it in 5 years एक साथ. वैसे you can do like IDF and some course if you want to do engineering or anything else with it. तो वो तुम कर सकते हो. वो benefits है आर्मी के कि, and they will pay for your education if you are extending your service in the army. और कैसा है ना, बच्चे, if you are like born and raised in this country, it is, you see your fathers and mothers, especially during war time,
a lot of dads and even moms go to reserves. तो बच्चे while growing up they see their moms and dads going to reserve duty. तो it is but natural कि उनको मतलब लगता है कि भाई हमें भी करना है. I'm not saying कि भाई सब वो माइंडसेट ही वैसा शेप हो गया ना. हाँ जी. I'm not saying there's no resistance. अभी मुझे समझ में आ रहा है यार. क्योंकि काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि no we want to skip. I'm not saying कि all kids would like to do IVF. Of course there are people who say like कि हमें नहीं करना है. Like it is not our choice. Na? It is mandatory for the entire country. So of course there are some people who say we do not want to do, but majorly people are like we want to fight for our country, we want to serve, we want to give our time to the country some way or the other. And then of course if you do not want to do IVF, let's say there are some kids that are mentally not stable to take the IVF service, so you can take up social service or national service usko bolte hain, where you can do some volunteering work and stuff like that, but you make sure that you give that time to the country in some way or the other. Tum social service karo ya national service karo, no national defense service karo, but yahan that's a nice concept na. मतलब in some way or the other when you turn 18 ये तुम्हारा जो टाइम है, वक्त तुम्हारा, तुम दो कंट्री को. Yeah, moral responsibility towards your nation. हाँ जी. That's something which is you have to do, which is great. But you as a person who was born and brought up in India, raised in India, in Indian culture, and then shifted to Israel, how do you pursue your identity? क्या आपको जैसे आप अपने बारे में सोचते हो तो क्या लगता है मैं इंडियन हूँ, मैं इजरायली हूँ, मैं Jewish of course तो हो ही, but how do you relate yourself to multiple things? I think for the longest time when I moved here, I wasn't confused, but एक conflict था कि am I less Indian now, am I more Israeli, I'm too Indian for my Israeli friends and I'm too Israeli for my Indian friends. Indian friends, yeah. Where do I fit? But then I realized, you know what, I'm unique and it's okay. Because सबकी अपनी अपनी journey होती है. I'm definitely a little more Israeli now. मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्या बोलते हैं straightforward, little more muffat हूँ, because that's how Israelis are. Like no BS, to the point, बात करो, let's get done with this, let's move on. Is India में we're a little more polite, we take more time, you know what I mean? Yes. I'm a little more Israeli now, but my Indian identity is very strong. मैं खुल के बोलती हूँ सबको यहाँ पे कि मैं भारत से हूँ, and it is your missed opportunity if you do not go to India. And I promote the Indian culture very proudly, and I invite Indians and non-Indians, like invite Indians to, because कभी-कभी क्या होता है ना, I've seen some Indians, they feel like, oh, you know, India बोला तो there is a certain perception, एक नजर से देखते हैं हम. Yes. You know, but we have come a long way. Bharat has come a long way, and we should be proud of what we are. Actually, yes. इसलिए भी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि how much Indians are perceived well in Israeli society, because अभी आप Jewish भी हो and you are Indian as well. हाँ जी. तो वो पर्सपेक्टिव आप ज्यादा बेटर तरीके से दे सकते हो. मे बी ये क्वेश्चन अगर मैं किसी अलग इंसान से पूछ रही होती who is not from Jewish community, उसका एंगल हो सकता है बहुत अलग होता. But what is your take on this? How do people of Israel perceive Indian people in general? Israelis love Indians, and also a lot of them after their army service, they either go to like South America, or they come to the East, mostly do like India, Thailand, Nepal, Sri Lanka. They come to, I can never find the right word, but you know, some people say they come to chill. Some people say they come to find solace. Some people say they come to find a break from the crazy things that happen in this country. But India is a safe destination, at least so far, thank God, for Israelis to come and just relax for a while after their army service. And in general, Israelis, they're not like, it's not like कि भाई इनको कुछ भी नहीं पता हमारे बारे में, उनको पता है. There is a decently big community, 80,000 Indian Jews that live in Israel. तो उनको पता है कि भाई हमारे साथ
देसी यहूदी भी है हमारे साथ, तो it's not a foreign Yes. concept for them. But if you ask Jews from the diaspora, let's say American Jews, Jews from the UK, Australia, उनको थोड़ा सा they're like, what's happening, you know? There's curiosity. It's not like कि भाई तुम लोग ऐसे हो. There's always a curiosity. कि how come there are Right. Jews in India? Do you know, what do you eat? How can you speak English so fluently? And I'm like, what do you mean? Oh. you you know what I mean? We are stereotyped, but We are, yeah. but वो ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई तुम ऐसे ही हो, वो क्यूरियोसिटी वाले एंगल से they'll come in. Curiosity. Exactly. You know, Revital, I live in Poland, और this is also a misconception here कि यार इनको English इतना अच्छे से कैसे आती है. I mean, English is better in India. So I would not say better. It's just because हमारा culture ही वैसा है. English is not a very luxury language for us, right? हम लोग by default ही बोलने लग जाते हैं, है ना. हमारी कंपनीज में वो चलता है, हमारे वर्क कल्चर में आ जाता है धीरे से. एंड देन वी डोंट टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर इन लर्निंग इंग्लिश. एक्चुअली हम बाय डिफॉल्ट ही इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोलने लगते हैं. जबकि पोलैंड में जैसे पोलिश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग, राइट. तो उनका अलग एक्सेंट होता है, अलग वे ऑफ टॉकिंग होता है. बट कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग एक्चुअली, यू नो, आपने बताया कि यार 80,000 पीपल इन इंडिया आर ऑलरेडी लिविंग, जूइश कम्युनिटी है हमारी. बट इंडिया में एक ये नोशन भी बहुत चलता है कि यार माइनॉरिटीज, आर दे सेफ और नॉट, राइट. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी, फॉर मी इट फील्स लाइक ये लेके आना नोटिस में बहुत ज़रूरी है कि यार हाउ डू the people who actually belong to minority community feel in India. Right. See, my Yeah. experience has been very positive, and not just mine, like my ancestors, my father, my grandfather, unke pardada. Like, there's a reason why we stayed in India. For people who don't know, Jews were persecuted and they were running away from, Yes. you know, kyunki it is from biblical times, but Jews have always been running from these bad things, from these evil things. But India was one place where Jews found solace, just like Israelis do even today. And they never left. We were given equal opportunity. We were given space to live. We were given equal rights for education. We were accepted with open arms. And, you know, we said we were going to sweeten the society and not overflow it. And I feel like it is in the fabric of the Hindu community to be accepting and being tolerant. And that worked very well for not just the Jewish community. There are Parsis, right? There are Parsis. There are so many other minorities that live. I'm just giving you an example. So I personally have had a very good experience. A lot of my other, let's say, Hindu friends, or even Christian friends, Muslim friends were always curious कि भाई तुम मतलब यहाँ की हो, इजराइल की हो, कहाँ की हो? And what do you guys eat? Who do you worship? There was nobody pointed fingers at me or my community saying कि भाई तुम क्यों आए यहाँ पे? तुमने यहाँ पे जगह ले रखी है हमारी. Nobody in India ever said that to me or my family, and I'm always going to be grateful because I talk to my other Jewish friends who were born in the West, and they have not had very good experiences. I have been accepted. Okay. And that is my biggest gift. I have had very good experiences growing up as a Jew. Because tumne bola na, if you ask any Jewish person, they're always going to have anti-Semitic experiences or Jew hatred and stuff like that. India mein mujhe kabhi bhi nahi hua ye. You never felt that, right? Never. But पता है जब आप ये बता भी रहे हो ना मुझे, तो to me, of course I also read this history and world history thing. We will come to that in a minute. But मुझे ये समझ ही नहीं आता कि why would, even for example, if you talk about yourself, why would somebody can question you कि यार why did you come here? Because मुझे ये लगता है कि इंडिया में ना एक notion है, you are an Indian first, no matter whosoever you are, whatever religion you are coming from, है ना. ऐसे अरे बहन है तू अपनी, अरे भाई है तू अपना वाला फीलिंग बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ. We don't judge people by कि okay, हमको कई बार समझ ऐसा नहीं है. No matter, I am very sure कि how much effort you must have put
to understand people कि यार make them understand कि यार what does this mean, Jewish भी एक religion है, क्योंकि इंडिया में अभी तो फिर भी सोशल मीडिया के कारण there is lot of awareness, पहले तो होती भी नहीं थी. Even in my childhood, if I say, I was not educated well enough to know, okay, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भी बढ़ के और भी धर्म हैं, there are multiple communities, है ना, इतना ज़्यादा नहीं था. बट स्टिल नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी छोड़ो, वी आर फर्स्ट इंडियंस, ऐसी वाली फीलिंग ज्यादा रहती है वहाँ. किसी को समझ में आया तो भी ठीक, किसी को समझ में नहीं आया तो भी ठीक, बट देन दे मूव अहेड विथ हम सब साथ ही है, वैसी वाली फीलिंग. दैट्स ग्रेट टू हियर बिकॉज वी शुड नो दैट आवर माइनॉरिटीज ऑल्सो, I mean minority, when I say actual minorities, because 80,000 is really, you would say, a less, मतलब एक substantial number है. 80,000, let me clear that. 80,000 in Israel. इंडिया में सिर्फ 4,000 बच्चे हैं मेरे कम्युनिटी से. बेने इसराइल 4,000 बच्चे. तब तो फिर देखो मेरी बात का जो एक्चुअली महत्व है वो और ज्यादा हो गया कि 4,000 है, बट देन यू डोंट फील लाइक यू आर जस्ट 4,000. दैट्स अ ग्रेट थिंग. हाँ जी. But it's good to hear. And now let's just move. I don't want to actually more dwell into this, but then I will have to, because it's a part of history and thing. How can you bring that to table, the practical experience about 7th of October? Because that's a tragic moment, that's a distress to the world, I feel. वो होना नहीं चाहिए था, बट लाइफ कैसे हिली वहाँ लोगों की, और प्रैक्टिकल कैसी दिख रही थी वहाँ पे. हमको जो मीडिया दिखाता है वो तो चलो ठीक है, आई फील मोर, आई डोंट नो इफ इट इज अ रियलिटी और अ फैसिनेटेड वर्ल्ड, व्हाट, बट क्या था वहाँ, क्या हालत थी तब? I think it happened out of the blue. Nobody was expecting. और intelligence failure भी हो गया था ना. So it was like, it was dangerous and embarrassing for Israel in those words. But when you see people getting, sorry to use those words, but these things have happened. When you see people getting murdered, getting raped, putting small babies in ovens जो होते हैं, and being live streamed when it's happening, something's wrong. Like, nahi, matlab something's wrong in the sense like you have crossed a line. You can't just go to your neighbor's home, do all of this, and then expect ki bhai, we are going to play the victim now. They will not react. And you will not retaliate. है ना? Right. And because Israel is so small. Israel's population is smaller than Mumbai's population. तो आप समझ लो. ठीक है? सही है. So everybody knew someone who was either a hostage taken into Gaza, or was serving in the IDF in the reserves, or was shot or murdered. Because it's a small, हाँ, क्योंकि क्लोज नेट कम्युनिटी है ना, मतलब लोग भी कम है, क्लोज नेट कम्युनिटी भी है, तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को जान रहे हैं. तो इतना डिसहार्टनिंग है कि आपको ऑलरेडी पता है कि यू नो समबडी whosoever has gone through this situation. हाँ जी. तो फिर और कैसा है ना कि मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, आपको भी दूंगी मैं. इफ यू गो टू दिस मूवी एवाटार, you know, when something happens to one person, like everybody feels it. वो वैसा वाला है यहाँ पे. And everybody was mourning, everybody was grieving, everybody was angry, and you just didn't know what to do. Because and why did this happen? सबको ही पता है क्यों हुआ है. No, I mean इस टाइम पे क्यों हुआ है? Oh, because it was planned that way. It was planned that way. It was also a Saturday, so it is the day of rest for the Jews. So they probably knew that, you know, ज़्यादा हलचल नहीं होगी. And intelligence failure bhi tha. A lot of the soldiers were killed. A lot of the bases were attacked as well in the south. Okay. And scene ऐसा हुआ था कि हिल गया था, मतलब the Jewish community हिल गया था, because after the Holocaust in World War II, उसके बाद this has been the darkest chapter in human history. People are still recovering actually, because हमारा जो एक last hostage था, he was dead, but his body was supposed to be brought back because we don't leave anybody there. His body was brought back, I think last year. तब जाके सब लोग ने ऐसे have like relaxed a little bit. कि भाई हमारा लास्ट बंदा घर पे आ गया, now we can move on. Right. लेकिन
प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली कैसे वो इम्पैक्ट किया था लाइफ्स को? मतलब जैसे डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट हुआ था? आपकी पर्टिकुलर लाइफ कैसे इम्पैक्ट हुई थी उसके कारण? आई थिंक was क्या हुआ था ना, बिकॉज अटैक्स वर नॉट जस्ट हैपनिंग थ्रू लैंड, इट हैपेंड थ्रू एयर एंड सी एज वेल. और ना बहुत साइड से यस। अटैक्स हुए थे. हमास ही नहीं अटैक कर रहा था, हिजबुल्ला हुतीज भी अटैक कर रहे थे. तो सब मतलब सब साइड हुँ। से घेरे हुए थे. सो प्रैक्टिकली डे टू डे मतलब वी हैड टू, आई वोंट से स्टॉप वर्किंग बिकॉज आई mostly work from home. But if you don't have a shelter, you're screwed because then you have to run to the shelter because then you have missiles coming from left, right, and center. So then your राइट, entire life राइट। is in the shelter then because you have to sleep there, try and eat there. फिर if you have kids and pets तो भाई तो फिर खत्म ही, because सबको लेके चलना है फिर. और जो सबसे बड़ा सबको लेके इशू चलना was है। for जो हमारे दादा दादी के एज के होते हैं, people who are a ओल्ड little more पीपल, हाँ, old ऑफ age, कोर्स। they can't run to the shelter every now and then. राइट। एंड अगेन लाइक बिकॉज वो साउथ से था, तो जो साउथ में रहते थे उनको जो, ओके लेट मी एक्सप्लेन वो कैसा प्रोसेस होता है. ओके सो वी यूज्ड टू गेट यस, यस। अलर्ट्स. अभी तो फिर भी थोड़ा सा हुँ। एडवांस हुआ है बिकॉज वी हैव हैड सो मेनी वॉर्स नाउ, देयर हैज बीन लाइक a level up on अपग्रेडेशन। how we get sirens. But वो time पे we never got alerts on our phones. The city sirens used to ओके। go off. इतने इतने loud थे ना, मुझे तो PTSD बैठ गया था. And every half an hour, every 15 minutes there was to be siren, and then you had to run to the shelter. Now I was in the center in Tel Aviv. Okay, so we had about हुँ, 90 हुँ। seconds to run to the shelter. If you're in any of the southern ओके। cities, you have less than 15 seconds to run to the shelter. Now imagine your grandparents who are you with a stick, or probably on a wheelchair, who have to run to the shelter in those 15 seconds. It was very इम्पॉसिबल scary, एक्चुअली। extremely scary. या। And काफी मतलब almost like I think 2-3 months back to back. It was like I was scared because my sister was called to the army, by the way. Her second year ओके। of IDF was during October 7th. हुँ। So she was called to the ओह! base, and I was like, shit. As Indian families, we are not used to this. वी Or आर at least, नॉट, I या। mean, I'm like, yes, we have people who serve the Indian army, but जो हम regular लोग हैं, like we don't really opt to go to the Indian army, right? एग्ज़ैक्टली, वो विलफुली होता है, इट्स नॉट Mandatory नहीं होता. येस इट इज़। हाँ, येस इट इज़ वेल सेलिब्रेटेड, मतलब ऐसा इज़्ज़त तो बहुत मिलती है Of जो जाते हैं। Yes, बट बट नॉट एवरीबॉडी ऑप्ट्स फॉर दैट, है ना? वो correct, मैंडेटरी तो नहीं है। correct. यहाँ पे mandatory होने की वजह से I mean I had to see my sister. She had come home for that weekend, by the way, जो attack हुआ था. तुरंत उसको call आया back to base, and ओके। she was very close to the south. Like her base was very close to the south, so we were getting scared. I was constantly in touch with her, but it was very scary because you knew somebody. My friends have been on uh, inside Lebanon and inside Gaza. I have not heard from them in weeks, and I'm like, ये जिंदा है क्या है इनका status? There's no way of reaching them, right? Because they are constantly fighting. But touch wood, the people I knew, at least the closest friends, are alive and healthy till date. But you know, you are fortunate enough that nobody around you was harmed. बट यार बहुत लोग ऐसे भी रहे होंगे ना कि बेवजह ही इस जंग के बीच में आ गए और जिंदगियां तबाह हो गई होंगी उनकी। Of course, we knew people, and coming ahead of 7th of October. I'm not sure if you knew about it, but मैं अभी बता सकती हूँ आपको. When Iran and Israel were at war in June of 2025, my family was affected because of a ballistic missile that fell in front of my parents' apartment. It was crazy. It was, हमें तो लगा भाई we are on the other side already. It was, मैं अभी हंस रही हूँ, but it is my trauma response. I'll be very honest with you. मतलब मुझे तो ये सुन के ही बहुत शॉकिंग फील हो रहा है बिकॉज ये सिर्फ देखो सुनने में तो मतलब आई मीन वी ऑल्सो हियर न्यूज, वी ऑल्सो वॉच वीडियोज, है ना? बट किसी से ये लाइव एक्सपीरियंस सुनना बहुत ही अलग अलग बात है। हाउ डिड दैट हैपन? आई मीन व्हाट टाइम वाज इट
क्या कर रहे थे आप लोग, एंड देन हाउ डिड यू गाइस प्रोसेस्ड कि यार ये हो गया है? Okay, so it happened at 4 o'clock in the morning, so we were all sleeping. Okay, now क्या हुआ था कि मैं मम्मी पापा के घर पे गई थी because they had a safety room in the apartment. तो बार बार फिर community shelters में भागने की जरूरत नहीं है. You can just have to go. Like, so their bedroom was the safety room basically. So I was sleeping with my sister in her room. कि मेरे अपार्टमेंट में शेल्टर नहीं था. So dad was like, तुम घर पे आ जाओ. Just sleep here and then next day go back. If you like, just come to sleep and then next day like do your thing and then come back to sleep. रात को 4 बजे कौन भागेगा रास्ते पे, वैसा वाला सीन था. Now that night me and my sister were being lazy. We did not want to run क्योंकि हम बोल रहे थे हाँ आयरन डोम संभाल लेगा हमें. But my dad pulled us out. The time he shut the door, boom. हमें लगा what timing, like literally what timing, it was like a split second. मैं तो मतलब मैं और मेरे पापा हाँ हमेशा बोलते हैं कि भगवान ने हमें दूसरी give us a second life. I went deaf for a few seconds because impact इतना था उसका. वो सेफ्टी रूम का दरवाजा मेरे बहन के ऊपर उड़ा and she got hit on her shoulder and on her hand. And I saw everything like fly. वो मूवीज में दिखाते हैं ना वैसा उड़ जाता है सब. वैसे I saw everything like fly by when the door flew. My mother thought the missile fell in the apartment. तो हमें we were like, you know what, we can't go out, नहीं तो हम नीचे गिर जाएंगे क्योंकि नीचे क्या होगा ना, we were on the second floor तभी. right? So we were like, you know what, okay, what should we do next? Now there's a protocol as civilians that you have to follow, or at least the home front command will send you these protocols and you try and stick to these. तुम्हारे जितने भी essentials है ना, passport, Israeli Aadhaar card, any sense of identification, keep it with you at all times, so that at least you can show, you know, या ये तुम्हारे documents like authority, हाँ authority, या तुम्हें if you have to fly out of the country in these times and stuff like that, तो रहे. तो मेरे मम्मी ने पैक ही करके रखा था ये सूटकेस बाजू में. तो वो सूटकेस लेके we were all in our night clothes. वही कपड़े पहन के we left the apartment because there was no time. We didn't know if the building is going to fall or not. है ना? And where did you guys plan to go? हाँ तो वही ना. Now from there we were like अभी कहाँ जाए? So I took them to my apartment first. But मेरे यहाँ पे shelter नहीं है. And I was living with roommates. Okay, so and it's okay. Now keep in mind we were not the only family that was affected. The entire neighborhood was affected. I will send you footage if you want to put. I'm just telling you. Oh please. Just to give the justice to this conversation. नहीं तो लोग बोलेंगे भाई क्योंकि proof कहाँ है? तो I'm giving you proof. Yes, guys, you need to listen this and you need to watch this actually. तो उसके बाद I was running because we are just two sisters. I'm the older sister. So I felt responsible for my family. So I started to call the police. I'm like, bhai, karna kya hai? Kahan jaye hum? It took them some time to like settle down because there were about, I don't know, 1,000 people that were displaced that day. पूरा neighborhood क्योंकि भले यहाँ पे गिरा वो ballistic missile होने की वजह से उसका impact पूरे neighborhood पे हुआ था. सबके दरवाजे खिड़कियाँ सब उड़ गए थे. So you can't live there now, at least for the time being, till it's repaired and stuff like that. Luckily, the Israeli government made arrangements for all the displaced families in nearby hotels, जहाँ पे shelters थे in -2, -3. So they kept us in the hotel जब तक there was a ceasefire. Settle down. Yeah, settle down. There was a ceasefire. तो तब तक हम वहाँ पे थे. But even if you're living in a hotel, it's not like तुम अपने घर पे हो और तुम मजे करने नहीं आए हो वहाँ पे. You feel like this is so uncomfortable. Of course. But no, like literally, thanks to the government because I couldn't imagine ये अगर कहीं और होता तो who would have taken care of us? कहाँ पे जाते? Who would have? Right. And the airspace is shut, so you can't really fly anywhere. So they genuinely took care of people. How many जितने भी थे उनका खाना पीना was taken care of. So credit should be given where it's due.
anyway, Heads off, actually. after that thing happened, we were given some time to find for a replacement, like another apartment. तो फिर तब जाके उसके बाद जब सेटल डाउन हुआ, my parents then managed to find another apartment. And it took me some time to actually process, because मैं रोई नहीं थी ढंग से. I think I feel like if you want to process, you need to cry. I had not cried. So I cried Right. after like everything had happened. I started to process and I'm like, this is crazy. Like ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे family के साथ होगा, but it happened. There's nothing really you can do about it. And as civilians, it's like collateral damage. Of course. I wouldn't say I've overcome it, but like I can talk about it. It's not like I want to hide. ये मुझे इसके बारे में बात नहीं करना. It's a touchy topic. Like I think the more you talk about it, the more you are able to process. And I believe Yes. the more you tell people the truth कि हुआ क्या था, because I know sometimes people are like, ये भाई ये AI proof कहाँ पे है. So when you tell your story as much as possible, I hope it is I'm able to convey what exactly happened. But अभी ये जो Exactly. war जो अभी शुरू हुआ था ना, by the way, today is the day 1 month ago when this war was started. So today makes the 1 month mark. So when this war started, I started to get flashbacks from the last war of whatever I It is saw like happen. a deja vu. You have already lived this moment, actually. A deja vu. And what happens is, when you're in the shelters, you hear the impacts of Iron Dome neutralizing missiles from Iran or Hezbollah, Hamas. Yeah. और ballistic missile तो और भी उसका impact like धूप 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 धूप. और अभी तो cluster bombs आ रहे हैं. So it's not just one missile, it's like a group of missiles. So you hear धूप 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 धूप, and I'm like, oh my god, यहाँ पे गिरना नहीं चाहिए, because I don't want to go through that process all over again, because it was very, फिर bureaucracy भी आता है ना उसमें कि तुम्हें insurance भी मिलेगा ये, but it was very like, it was a mess. मतलब वो है कि उसका what would I say कि cope up mechanism भी है, but cope up mechanism is again a cope up mechanism. It's not a normalcy which people go through, है ना. वो सब ठीक है कि you were taken care of, which is very great, but to just being evident of such situation is terrific in itself. कि आप ऐसी कोई सिचुएशन का पार्ट थे, आपने वो देख लिया अपनी आंखों से, ये लाइफ टाइम के लिए बहुत कहीं ना कहीं रहने वाला है. And that's why it is very important to talk about. Why? Because people should know. हमें क्या लगता है कि पता है आपको, हम न्यूज़ देखते हैं, वो सायरन सुनते हैं, एक पॉइंट के बाद ना वो बड़ा, मतलब टू बी ऑनेस्ट, लोग सायरन सुनने की आवाज में ही बहुत आदी हो जाते हैं. दे गेट यूज्ड टू दैट कि हाँ होता ही होगा, बट दे डोंट रियलाइज द इम्पैक्ट एंड प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कि यार ये हमें म्यूजिक लग रहा है ये किसी न्यूज चैनल पे, बट दिस इज रिलेटेड टू लाइव्स ऑफ पीपल. उनका डे टू डे लाइफ है भाई, उनको शेल्टर में भागना, उनका एक प्रोसेस है. ये सायरन सिर्फ सायरन नहीं है कि आपने सायरन सुना और ओके सायरन बज गया. नो, दिस इज एन इंडिकेशन टू गिव एन एक्शन पॉइंट टू दैट कि अब भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है. दिस इज हाउ यू आर गोना प्रोसेस थ्रू दैट थिंग. It's very very difficult, and I do appreciate you to talk about this thing so that people know कि यार कितना चीज़ों से go through करते हैं वहाँ के civilians जब ये सब चीज़ें होती हैं. हम तो बहुत आसानी से सुन लेते हैं, and really we don't realize the impact of that up to the level it should be done actually. But when you say about this shelter homes, ये कैसे होते हैं, इनमें कैसे अरेंजमेंट्स होते हैं, एंड हाउ डज दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द नॉर्मल होम? मतलब क्या डिफरेंस है वहाँ पे रहने का, कितने देर रहना पड़ता है? हाउ डू यू गेट एन इंडिकेशन ओके दिस इज द टाइम यू कैन कम आउट एंड मूव टू योर अपार्टमेंट्स बैक? ओके, तो अभी बिकॉज ऑफ प्रीवियस वॉर्स Israel has become like better at sending alerts to civilians. ठीक है कि अभी दिन में तो multiple times आते हैं. It's not like you should be staying in the shelter. Like the first day of the war, we were in the shelter for about 8 hours. We were going crazy because ना, और तुम community shelter में रहो तो और भी की भीड़ ज़्यादा होती है. People are restless. You can see different people reacting to the impacts differently. Some people are shivering. Some people start crying. Some people have no reaction at all. Mothers with their kids are constantly concerned because they're more scared for their kids than themselves. There are a lot of pet parents with their pets that come to the shelter. तो मतलब you see वैसे वाला माहौल. अभी शेल्टर कैसे होता है ना, तेरा
I would say like 3 types. एक होता है वो तुम्हारे अपार्टमेंट के अंदर, so that you don't have to run to Okay. -2, -1 or the community shelter. These are in there. These have been built in some of the older buildings, but नए बिल्डिंग में तो लॉ ही है कि भाई शेल्टर रूम होना ही चाहिए बनाना ही है। अपार्टमेंट के अंदर, करेक्ट। ठीक है. Now some buildings, most buildings, they don't have a shelter in the apartment. तो some buildings have shelters in their -2, -3, तो तुम नीचे भागते हो. And then Okay. some buildings don't even have that. तो community shelters होता है कि भाई ये मतलब ये नुक्कड़ के बाजू में एक शेल्टर है तो उधर भागो. So see your nearest shelter. तो it depends. Now for example, sometimes I go and get coffee और बीच में ही बज जाता है siren. So okay, तो अभी क्या होता है ना, पहले तो बस सिटी में siren होता था. अभी we get alerts on our phones कि भाई in a few minutes there's going to be an attack. Be next to a protected shelter. तो then people just start कि अब कोई नहा रहा है तो भाई पहले कपड़े पहनो, कोई कुक कर रहा है तो पहले गैस बंद करो. तो we are like prepping to now run to the shelter. ठीक है. फिर उसके बाद the sirens go on. क्योंकि अब कोई गहरी नींद में हो तो वो भी उठ जाए, ठीक है, या किसी का फोन साइलेंट पे हो और उसने अलर्ट ना देखा हो तो उसको सुनाई दे. या बूढ़े लोग हो who can't really hear properly, they are able to hear. They're also able to hear that. Yes. So, and then you have to wait in the shelter. Now, कब तक रुकना है? And of course you can hear impacts. मैंने तो I've heard both. जो न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं और जो गिरे भी है तेल अवीव में. जो गिरते हैं ना, मतलब वो खिड़की और दरवाजे से हिल जाता है उससे. And then you get an alert on the phone saying कि now you can leave the protected space. Okay. Some days go back are to your. हाँ जी. So then I can like अभी हम इस कॉल पे आने से पहले I had to run to the shelter, and then I got a message that I could leave and then I would come back. Okay. And then some days are crazier than others. Weekends are crazier because they know शबात का time है, so usually Jews like don't work and rest more, तो तब ज़्यादा मिसाइल आते हैं. और weekday पे Saturdays mostly, right? हाँ जी, फ्राइडे इवनिंग से लेके सैटरडे इवनिंग तक जो शबात का होता है ना, सनसेट टू सनसेट, वो वाला जो होता है. रात को भी ज्यादा आता है बिकॉज दे डोंट वांट यू टू स्लीप. 1 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock is more like the duration. और फिर डिपेंड्स. अभी आज सुबह थोड़ा सा शांत था, बट अभी 3 बजे, नॉट 3 बजे, सॉरी, अराउंड 2:30 to 45 ऐसा आया था. रैंडमली भेज देते. But life still goes on here because I mean this country has endured so many wars, but you know it doesn't stop. Your life still goes on as much as possible. Of course, schools are not operational because they don't want to send kids to school. But Zoom पे classes हो रही हैं बच्चों की. Most corporates are working from home. And there is an understanding कि भाई थोड़ा सा डिले मीटिंग में क्योंकि सायरन बज रहा है तो कोई कुछ बोलेगा नहीं कि भाई तुम क्यों लेट मीटिंग के लिए. अरे सायरन बजा यार. What I mean? People are understanding and people are cooperating with each other. Accommodative है. The cafes and restaurants are open to some capacity, but they are open because local businesses बंद हो गए तो खत्म. The economy is going to go for a toss. Right. Economy. है ना? And then actually movie theaters are on. I was surprised because Dhurandhar is playing. Dhurandhar 2 is playing in Israel, by the way. But the capacity is about only 50 people in the theater. Okay. First 1 week was quiet. मतलब सभी बंद कर दिया था. But they knew that this war might go on for a long time. That doesn't mean कि भाई सभी बंद हो जाए. तो to some capacity उन्होंने शुरू कर दी है. And then you might have seen some parties happening in shelters. Yeah. I was coming to that point. Because, you know, Tel Avivians, like Mumbaikars, they love to party. Tel Avivians, like, भाई, party तो मतलब रुकनी नहीं चाहिए. तो the party must go on. The party must go on. बाकी सब ठीक है. हाँ. And it is also people's way to cope with this situation. भाई जीना छोड़ दे क्या हम? Exactly. Right. You have to move on. वो वाली बात है कि the more you fall into that challenging situation,
देन मोर स्ट्रॉन्गर यू रेज, है ना? मतलब तुम उतने ऊपर उठते। एक्चुअली पता है, एक बहुत अच्छी बात है कि ना, जब किसी भी कम्युनिटी, किसी भी इंसान, किसी भी एक सोशल ऑर्डर ग्रुप ने जब अपना लोएस्ट पॉइंट को हिट कर लिया हो ना, मतलब उनने वो सहन कर लिया कि अब कोई उनके साथ इससे बुरा क्या ही कर लेगा, या व्हाट बैड मोर कैन हैपन, देन दे ओनली हैव वन ऑप्शन टू राइज एंड रेस। फिर वो जेनिथ की ही एक राइड है, मतलब नादिर और जेनिथ के बीच की सिचुएशन में आप फिर ऊपर ही जाओगे। देर इज नो पॉइंट ऑफ कमिंग इन बिटवीन। एंड दिस इज एक्चुअली मैसेज टू होल वर्ल्ड कम्युनिटी कि यार, वो हम बोलते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट गो ऑन। ये आई थिंक इसराइल से ज्यादा बेटर कोई ने नहीं समझाया कि no matter how much you're gonna hit, but then we are always going to stand again and stand with a strong nature. यस। वो एक लेसन तो दिया है भाई वर्ल्ड कम्युनिटी को, नहीं, विच इज अच्छी बात है। अप्रिशिएटिंग। ये तो बोलना ही पड़ेगा। यस, थैंक यू। आई विल कन्वे योर इमोशंस टू मोर इजरायलीज। बट ऐसे एक भी होता है ना कि हम थोड़ा सा थक भी चुके हैं, लाइक यू नो बस करो अभी, बहुत हो गया, लाइक एग्जैक्टली। यू नो बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू मल्टीपल वॉर्स। इट्स नॉट लाइक कि भाई ये हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड बिकॉज इट्स अ स्मॉल कंट्री एवरीबडी फील्स इट एंड एवरीबडी गेट्स अफेक्टेड। तो ऑन द फ्लिप राइट राइट। साइड रविता, इवन, हाँ जी, एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि वो आई विल स्किप दैट इन अ मिनट इफ आई विल ओके, नॉट से इट राइट नो नाउ। वरीज नो वरीज। टेल मी वन थिंग यार, व्हाट 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 कुड बी द पॉसिबल रीजंस जो अभी हो रहा है, व्हाई इज दैट हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑर्डर? मतलब कि ये हो क्यों रहा है प्रैक्टिकली? जूइश कम्युनिटी इम्पैक्ट हो रही थी क्या, या इज इट अ रिटेलिएशन, और इज इट अ रिस्पॉन्स? हाउ डू यू सी फ्रॉम योर एंगल? We were always threatened, and I believe Israel saw an opportunity to destroy what could be dangerous to not just Israel but also the entire world. And I believe that was why this step was taken, because ये अभी destroy नहीं किया ना, it is going to come back, ओवर or द it will पीरियड come ऑफ टाइम, या over a period of, ये अभी नहीं होगा तो ये होगा 10 साल में या 5 साल में या 3 साल में. I'm not sure if people see it that way. Like, this is my opinion, my point of view. जब तुम्हें खतरा दिखता है ना, like don't wait for it to happen. You know what I mean? And this is, it's not like, because we have, this is not the first time, क्या बोलते, this time Israel and US attacked, but Iran has been attacking Israel for years, and it has proxies, Hamas, Hezbollah, Houthis, they are all Iran's proxies. किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना is what I'm saying. Okay, so when you test our waters for so long, you should be expecting a reaction, a response, or an offense like this is a proper actually managed response. This is not just a reaction तो होता है किसी ने एक मारा, एक ने एक मार दिया, किसी ने एक मारा, रुको, let's wait and watch. This is a response, properly given response actually. But yeah, okay, coming back to this community differences and all, I mean, especially, why do you feel we somewhere down below the line, we all know why do Jewish people especially face this anti-Semitism, right? But what I would like to ask this I would like to know this from an angle of Jewish person. Why do you feel ये है क्यों, ये इतने hatred feeling जो थी, या over the period of time world war के समय भी हमने देखा, why do you feel is it there in the world? I think because I think in today's world, it is kind of cool to hate on Jews. You see random teenagers going to just random teenagers, or even people going to university. They don't even know ABC of like when it started, why it started to happen. But because you see people protesting, let's join the cool gang because it's, it's up and coming, trendy hai. I don't think people see what exactly happened. Also, the information war, I believe the Jewish people are trying to educate people, but for some reason, I don't think we are doing a good job. And I don't think we are reaching the right people to tell them ki bhai, the narrative is ulta. We are the victims. वही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि what according to you is the narrative?
because वो बहुत I mean we can talk in hidden words, you know Yeah, what do I mean. yeah. But what do you feel, what is the narrative which has been set and which is wrong and you would like to correct it in a way कि यार ये बात ऐसी सोची जा रही है but ये ऐसा है नहीं and this is the correct perspective according to you. मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ, because this is like from very, this is not new, right? It's been happening for years now, but I'm thinking maybe October 7th could probably be a good example because everybody knows about it. So October 7th पे we were attacked, and when we retaliated, they played the victim card, and for some reason they won the game of this information war. But हो रहा था उल्टा. Our people were, and not just Israelis, there were other hostages of other nationalities that were taken in. But who was to blame? Us. Like, it was like, bhai, matlab, where your moral compass is gone for a toss. And do your research. और फिर क्या हुआ ना कि I don't think they expected the kind of retaliation Israel gave. And when it gave, they couldn't handle it. So the only thing they could do is spread more misinformation on social media. अब जो इजराइल और गाजा में नहीं रहते, उनको तो पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है. तो जो नैरेटिव ज्यादा पुश होगा, I think that was believed more, is what I'm saying. And there is always strength in numbers. So the numbers game happened on social media. And we absolutely lost the narrative there. And then they were like, bhai, proof kahan hai? They live streamed the entire damn thing on Facebook and on Telegram, and you're asking where's the proof? You've got to be kidding me. Right. And okay, तो वो तो समझ में आ रहा है कि according to you the victims were portrayed as the attackers in a way. Yes. है ना, और वो narrative गलत तरीके से set हुआ and then the world actually believed on the number game and all those things what has happened. But let's move a little more in the past, है ना. ये war से नहीं, I want to know like why people in general have this feeling. हम जब मतलब आपको पता है, I didn't hear in my childhood that there is this feeling of anti-Semitism for Jewish, or no, I actually didn't knew this concept. Only when I was adult enough and then I started reading and social media कि अच्छा ये तब मुझे इतना शौक लगा था कि is this there is a feeling like this as well for a community. But what do you think? ये war छोड़ दो, but in general आपको क्यों लगता है कि why do people carry this feeling? You get my point, right? I think I get it, so I'm going to try and answer it. I think it's just like, yeah. I think it was just easy to blame, because if you go back in history, Jews were blamed for everything. Okay, so I think it was just easy to blame. Even people say, oh, Jews क्या बोलते, control the media. If we were control the media, we would be winning the information war. As simple as that. Oh, Jews control the Hollywood, then we would not have these actors wearing Free Palestine pins. And then what has happened over time, because Jews are so mentally tired कि भाई हम कितना prove करें खुद को. I think somewhere a lot of Jews are like, you know what, उनको बकवास करने दो, let us live our lives. But that is also not playing in our favor. So there are a lot of advocacy influencers आप बोलो or personalities who are trying, they have made this their mission. कि we want to debunk all the things that have been wrongly said about the Jewish community. So I think these are the things that Jews have been going through. कि मतलब प्रूव भी करना है, अभी हम थक भी गए हैं, बट हम रुक नहीं सकते, नहीं तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट बैठ गया है. सो इट रियली डिपेंड्स हू यू आर टॉकिंग टू. सो राइट, I am not into full-time advocacy. My form of advocacy is cultural advocacy, where I show people that I talk more about the Israeli culture. There are more people that talk about politics, geopolitics, defense, and stuff like that. That is not my area of expertise. But what I like is, because I very much thrive on culture, I saw that, you know, काफी similar है, but why aren't people covering that? So that is something that I started to do and bring more Israeli culture to the world.
So that is my form of advocacy. राइट। यार वही वाली बात है ना, कम्युनिटी पे एक्चुअली प्रैक्टिकल लेंसेज से देखो ना तो बर्डन 3-4 तरफ से है। पहला है कि आपको अपने आप को डिफेंड भी करना है दैट द नैरेटिव इज रॉन्ग, है ना? हिस्ट्री से नरेशन जो आ रहा है वो गलत है। दूसरा है कि आपको वो डिफेंड बस वर्बली नहीं करना है, आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस के थ्रू भी करना है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस ऑफ कोर्स, कि आपका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि यू कैन नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। मतलब यू कैन नॉट टेक लूज इंटैक्ट आइडिया कि हाँ ठीक है चल जाएगा, इतना सिक्योरिटी नहीं भी देखेंगे तो इट्स नथिंग इज गोना हैपन। यू नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट। Yeah. तो वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सिर्फ डिफेंस नहीं है, वर्बली नहीं है, वो एक्चुअली डिफेंस इन डिफेंस भी है, वो वर्बल डिफेंस भी है, वो फ्यूचर को सेफ और सिक्योर रखने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिकॉज नंबर मैटर्स रेविताल, आई फील नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। आप जितने पॉपुलेशन में हो, है ना, क्योंकि क्योंकि क्या होगा ना, कल्चरल गेम कैसा होता है, कल्चरल गेम कम्स ऑन अ नंबर पॉइंट। द मोर यू आर ऑन नंबर साइड द मोर इम्पैक्ट यू हैव ऑन द वर्ल्ड। दिस इज लिटरली वेरी ट्रू, है ना? अभी आपकी पॉपुलेशन अगर बहुत हाई है तो आपका इम्पैक्ट वो होता है, वो दिख रहा है। वो अभी आप देखो मल्टीपल नेशंस आर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, तो नंबर्स मैटर तो करते हैं। आप कितना भी उसको शुगर कोट कर लो या फिर किसी भी लेवल पे जाके उसको घुमा के बात बोल दो, बट अगर आप कम हो तो भाई आपको उतना इंटैक्ट रहना पड़ेगा और लोगों को भी बताना पड़ेगा कि भाई कम है पर ग्रांटेड नहीं है। Exactly. तो And you have that. we are just a 0.2 of the world population, the Jewish community. That's what I am saying कि वो नंबर मैटर तो करता है and you have a bigger responsibility of keeping yourself actually, this is a bad word to use but keep yourself in future। बहुत सिंपल बात है, भविष्य में अपना अस्तित्व में रहना है तो आपको प्रेजेंट को तो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गोना हैव यू विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट एंड देन फ्यूचर जनरेशन रोएगी कि भाई बुजुर्गों ने तो सेफ सिक्योर नहीं करके गए, है ना? दैट कैन हैपन। सो दैट Yes. आई डू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। बट और पता है टू बी ऑनेस्ट, ये वाला मतलब ये जो आज का जो कॉन्वर्सेशन था, जब मैं ये सुन रही थी आई वॉज जस्ट हैविंग अ फीलिंग बैक इन माई माइंड कि यार हम कभी कभी ना अपनी जो नॉर्मेलसी होती है ना लाइफ में, कितना उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे आई वेक अप, आई डू सर्टेन स्टफ, आई डू अ जॉब, आई हैव अ 9 to 5 जॉब, आई मेक वीडियोस एंड देन आई मे फील ओवरवेल्म्ड समटाइम्स कि यार बहुत काम कर रही हूँ मैं। बट कम ऑन, टेक अ पॉज, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। पीपल लाइक यू फॉर एग्जाम्पल एंड मोर पीपल लाइक यू वॉर सिचुएशन में है, दे आर ट्राइंग टू मेक देयर लाइफ्स एज नॉर्मल एज पॉसिबल डिस्पाइट ऑफ नॉट लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल बिहेव करना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट एबनॉर्मल लाइफ में नॉर्मेलिटी को फील करना और करवाना इज एन एबनॉर्मल थिंग इन इटसेल्फ। I agree 100%. ये मैं kudos to कभी कभी you बैठ के guys and सोचती हूँ, I मैं बैठ के सोचती हूँ yeah कभी yeah कभी yeah कि मतलब life in India would have been so much different, and life here is so different. Again, no complaints. Like life in India is, I don't think I would ever replace my childhood and my early 20s over there. I've had the best time. But ये भी एक नया experience है. You learn so much about human behavior and point of view as an Indian when you step out of India and live in the Middle East, especially in a country that of is course always on the radar. yeah and that too somewhere Israel for you is also a home country I would say। मतलब वो जैसे ये बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मी बीइंग एन हिंदू वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, फॉर एग्जाम्पल कोई और कंट्री में मैं रेज हुई हूँ, वहाँ का कल्चर भी मुझे अपना कल्चर लगता है बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, बट देन आई ऑल्सो हैव अ कल्चर एंड रिलीजन जहाँ पे मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया जाती कभी वैसे, तो वो फीलिंग सेम वैसी ही होती। तो इट्स नॉट अ, वही मैंने तभी आपके इंट्रोडक्शन में मैंने यूज किया कि परिचय ही दो जमीन है। इट्स नॉट नेसेसरी, हमारे दिमाग में इतना फिट कर दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल वी विल से माय नेम इज अनुभि, आई कम फ्रॉम दिस प्लेस, बट मे बी ये तो हमारा नरेशन सेट किया गया है ना। हम हो सकता है दो जमीनों को बिलोंग करते ही नेचुरली करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉर्मलसी ओनली। बट ओके, ये वाला तो जो आई वुड से दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड side of your life, right what you are living now and what you are facing, and I hope this gets better soon। बट कभी ये सारी सिचुएशन के बीच ऐसा मन करता है कि यार मे बी शुड आई मूव बैक टू अदर कंट्री,
maybe India, it could be other one as well. ऐसे मतलब at least in the recent years since Israel grown me ऐसा कभी लगा नहीं कि you know I could probably move back to India या कहीं और. Of course मतलब India is my first love and will always remain my first love. But at least like now even after so many things that have happened with my family personally going through so many things कभी लगा नहीं कि भाई मतलब let's go. Actually a lot of my friends and relatives said कि तुम वापस आ जाओ. फिर हमने बोला कि हमने यहाँ पे अभी मतलब फ्रॉम स्क्रैच पूरा सेटअप कर रखा है. वी हैव अ जॉब, फैमिली, फ्रेंड्स है, कम्युनिटी है. वो सब छोड़ छाड़ के वापस आ जाए मतलब इट डिडंट फिट राइट. इमोशनल कनेक्शन भी होगा कि हाँ भाई वही ना मतलब इतना इन्वेस्टमेंट करा है इमोशनली, फाइनेंशियली, इतने टैक्सेस भी भरते हैं यहाँ पे. सो वही yeah, I mean, it just doesn't, mujhe, at least for now, I don't see myself moving anywhere. I don't think hoga bhi, but I mean, you just never know. Like I said, never say never because you just never know. Yeah, I mean, अभी की सिचुएशन में ऐसी फीलिंग नहीं आती है. That's the beauty of actually. मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती थी, like the roots of Jewish community are also very strong and very I would say belongs to very old times ना. तो वो I would say कैपेसिटी कितनी है अपनी रूट से कनेक्टेड रहने की, है ना. मतलब हाउ डू यू सी पीपल इन इजराइल कि नहीं ये हमारी होमलैंड कंट्री है, वी हैव टू फाइट फॉर इट. आर्मी में, डिफेंस में तो ऑफ कोर्स वो बहुत हाई है वो जॉनर, बट सिविलियन होने के नाते लोगों में क्या फीलिंग है, व्हाट डू पीपल फील इन दैट होमलैंड. आई थिंक ये जो नेशनलिस्टिक जो भावना है सबकी, इट्स वेरी स्ट्रांग. इट रिमाइंड्स मी ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया में भी वी आर इंडियन फर्स्ट, राइट. वहाँ पे इवन इफ यू कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड ओवर टाइम व्हेन यू स्टार्ट लिविंग हियर, ये जो यहाँ का जो वाइब है कि ये हम दिस इज लाइक आवर होमलैंड, इफ वी डोंट फाइट फॉर इट नोबडी एल्स विल. एंड देन इवन इफ यू आर फ्रॉम, तो अब आई डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू the IDF because they're like you're too old for the IDF. I was like chalo theek hai. Why not? Like I'm okay. But now when I think about it, I'm like karna chahiye tha. Probably should have done like at least a year or something. But okay, maybe this was my path to do more awareness for Israel in a different way, or to serve Israel through information and content. You never know. Right. But when people are affected, यहाँ पे वॉलंटियरिंग का बहुत मतलब ये है, इट्स वेरी डीप रूटेड. इफ समबडी, लेट्स से नाउ वी वर अफेक्टेड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु केम टू हेल्प, नॉट जस्ट फाइनेंशियली. मैंने एक्चुअली एक फाइनेंशियल कैंपेन भी शुरू किया था बिकॉज माई पेरेंट्स लॉस्ट अ लॉट ऑफ देयर थिंग्स, बट नॉट जस्ट फाइनेंशियली, ऑल्सो लाइक तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, हम लेकर जाते हैं आपको. नो नीड टू यू नो सिट एंड थिंक कि भाई लॉजिस्टिकली यू हैव टू डू एवरीथिंग. कौन करेगा, राइट. A lot of people lost their clothes, so people donated clothes. अभी soldiers को खाना भेजना है, तो people come together to a war kitchen. मेरी दोस्त है who actually runs a war kitchen. So every Thursday they'll prep and Friday morning sandwiches, salads, rice, वो सब इकट्ठा खाना बना के, then एक ड्राइवर होता है जो पूरा ये खाना soldiers के लिए लेके जाता है so that they can eat well. क्योंकि आर्मी का खाना थोड़ी इतना 5 स्टार जैसे होता है, इट इज नॉट. सो आर्मी का खाना यू नो हाउ इट इज मोस्ट बेस्ड. तो ताकि उनको लगे कि भाई होममेड फूड मिले, उनको थोड़ा अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना मिले, तो पीपल कम टुगेदर एंड डू ऑल ऑफ. वो वैल्यू भी लोग दे पाए ना अपनी तरफ से, दैट वी अभी वैल्यू देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. दिस इज वन ऑफ दोज वे ना कि वी वैल्यू योर सर्विस, व्हाट यू आर डूइंग फॉर द नेशन. ऑल्सो अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू. Thank you for keeping us safe so that we can sleep at night. Yeah. And our kids can go to school. Exactly. Stuff like that. Very. So, matlab, people in their capacity, they try and help as much as possible. सिर्फ पैसा देना जरूरी नहीं है यहाँ पे. तुम तुम्हारा टाइम दो, तुम्हारे रिसोर्सेज दो, तुम किसी को कनेक्ट करो. I think that is an integral part of the Israeli and the Jewish community. वो तो वही नेशनलिस्ट फीलिंग को आप डिवाइड कर सकते हो. समटाइम्स सोशलिज्म इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म.
जब आप लोगों के कम्युनिटी में उतरते हो, लोगों को सोसाइटी के बेस पे ट्रीट करते हो, वो भी एक फॉर्म है। इट इज़ नॉट जस्ट कि इन वर्बल माउथ स्पीकिंग वर्ड्स कि अरे नेशनलिस्ट मतलब बहुत ही अपने नेशन के लिए ये नो, सर्विस इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ आई फील नेशनलिज्म ओनली। जब आप लोगों के लिए सर्विस देते हो स्पेशली फॉर पीपल अराउंड यू, यू डोंट नीड टू रन टू 10 माइल्स कि यार नहीं देख के आना है कि कौन सफ़र कर रहा है। यू कैन easily find people around you who are in need and you can help them out and do certain stuff for them, but this is a very hard life people मतलब अभी लोगों को comfortable हो गए हैं वो या कैसा है, they are thriving for coming to normal pace, what is the demand from the government basically कि यार अब ये क्या करना है, मतलब we want to come to normalcy on life or what? आई थिंक सिविलियन साइड से ज़्यादा डिमांड है कि ये कितने कितने देर चलेगा, ये कितना खींच सकते हैं, और there's only so Exactly, हाँ, much you can take. I think people have come to that that's what. point now. But again, it's हम्म like ये अभी नहीं किया तो कब होगा? Yeah, again, this is going to repeat. तो ये अभी झेल ले ताकि फ्यूचर में थोड़ा सा शांति हो in the Middle East. So it's a mixed feeling. I think general public demand is, what can we do so that we can go back to normal? I think parents are more concerned because they also have to handle their work and also handle the kids. Wow, kids. I think I'm not saying, I mean, young people have different ways of coping with this, but जिन्हें ज़्यादा responsibility होती है, family वाली responsibility, I think they are more concerned. Of course, young people who want to get married are like, all my bookings are gone. Because there are some people who got married in the shelter. Everything got cancelled, so they got married in the shelter. One of my friends got married in the shelter. Oh, But not everybody wants to oh, get married in a shelter. They want to invite their friends and family in a safe environment of and course. celebrate. 3 of my friends, they had their birthdays in March. We couldn't really celebrate it. I mean, हम मिले Of थे course. in a small capacity, but धूमधाम से नहीं मना पाए. You know what I mean? And then even if you celebrate, you always have that fear ना कि यार कुछ आ ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो वो सेलिब्रेट कर भी रहे हो, चलो आपने बुला भी लिए बहुत लोग, बट देन मेंटली तो आप रिलैक्स्ड नहीं हो ना, यू आर इन दैट वॉर सिचुएशन, हाँ जी, एनीथिंग कैन हैपन। हाँ जी। तो अभी देखेंगे, मतलब it's definitely more of, okay, when will this stop? When can we go back? Because some people have left Tel Aviv and gone to their relatives' place, friends' place. जहाँ some cities are less impacted than other cities. Tel Aviv is the most impacted because, Tel Aviv पे हमला किया, so it is like a statement. So a lot of people have left Tel Aviv because a lot of people have PTSD. उनको वो siren का आवाज सुन के they start going crazy. And then also, living this life on a daily basis, it's been almost 30 days now. About how time flies, I can't believe it's been a month. 1 month, it's already been a month कि ये सब सिचुएशन चल ही रहे हैं। करेक्ट। तो काफी सारे लोग मतलब सिटी छोड़ के भी गए हैं, तो जब थोड़ा सा ठंडा होगा या सीज फायर होगा, आई डोंट नो व्हेन, तब वापस आएंगे. सम पीपल डू इन एंड आउट, मतलब अगर कुछ पिकअप करना हो या 2-3 दिन रह के फिर वापस निकलना हो, दे डू दैट. एंड सम पीपल दे कम बाय देमसेल्व्स, दे डोंट हैव एनी रिलेटिव्स टू गो टू. तो वो Tel Aviv में रहते हैं, दे हैव देयर वेज ऑफ फ्रेंड्स के साथ रहो. या एंड इज इट लाइक कि गांव तरफ जाओ, विलेजेस तरफ जाओ तो इम्पैक्ट, मतलब यू विल फील मोर सिक्योर एज कंपेयर टू सिटीज, इज इट? और देयर आर टारगेटेड विलेजेस एज वेल कि नहीं, कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ही टारगेटेड है वो. ओके, सो यहाँ पे विलेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स मोर लाइक किबुट्स, द कम्युनिटी प्लेसेस वेयर यू लिव, किबुट्स एंड मोशाव बोलते हैं उसको. सिटी लाइफ का मोर कम्युनिटी ओरिएंटेड स्पेसेस होते हैं. एंड दे आर नॉट इन, दे आर लाइक वेरी, दे आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड, नॉर्थ या साउथ में है. बट अगेन लाइक yesterday we had attacks from Hezbollah, तो नॉर्दर्न एरिया में ज्यादा अटैक्स थे because they are up north, right? There's no guarantee. Again, I'm in Tel Aviv, so sometimes I'm unable to know what is happening throughout the country because हमें alert नहीं आ रहा doesn't mean other cities are not getting alerts.
You know what I mean? एग्जैक्टली मैं वही समझना चाह रही थी कि सिटीज में भी डिफरेंशिएशन है क्या? फॉर एग्जांपल तेल अवीव माइट फील मोर वॉर प्रोन हाँ, बेसिकली, टेल अवीव मोर या फिर वॉर कोई सिटीज प्रोन ऐसी है हैं। डेफिनेटली। मतलब यहाँ पे मिनिमम 2 या 3 आते ही है सायरन दिन में. सम डेज देयर आर मोर, बट आते ही है. लाइक वी हैव टू बी रेडी. फिर बिटवीन द सायरन्स भाई जाके ओके खाना बनाओ, नहा लो. नहीं तो आई गॉट स्टक दैट डे. I was like, oh my god. There was some of my friends got stuck while having a shower and came in the shelter with shampoo in the hair. So दैट साउंड्स फनी बट आई डू रियलाइज इट इज नॉट फनी एट ऑल। no, इट्स I mean मैं वेरी फिक आपके साथ हंस रही हूँ, सिचुएशन but like I'm living this life right now. और मैं हमेशा सोचती हूँ हाँ मैं मेरे बच्चों को बताऊंगी. I will tell my grandkids हमारे दिन कैसे थे. We still used to work when we had sirens. You know what I mean, right? Yeah, of course I do know. Okay, Ravital, do you, I mean, you must already be knowing about this Auschwitz concentration camp, which is in Poland. So it's very nearby to my place. Okay. And when I read about that, it was the most terrific incidents I have read in human history. कि यार ये भी होता था, है ना? तो when you see things like that, तो क्या क्या फीलिंग है? मतलब वो फीलिंग हेट्रेड है, वो फीलिंग मोर लाइक कि टेकिंग रिवेंज ऑफ दैट थिंग दैट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, समडे वी आर आल्सो गोइंग टू टेक रिवेंज. व्हाट इज दैट फीलिंग? I personally have been to Auschwitz, and I think as an Indian Jew, like I read about these things, okay, but I didn't grow up with grandparents who were survivors from the Holocaust, because India kept us Okay. very safe. So like I knew of it, but when I actually went and saw with my own eyes, matlab it took me some time to process कि भाई ये matlab ये like I knew it had happened, but when you see it with your own eyes, it's unfathomable कि ऐसा कोई कर सकता है. This ideology of wiping out an entire race is मतलब मैं सोच ही नहीं पाती हूँ कि यार ऐसा कोई सोच भी सकता है. But when you have proof, then you're like, you know, कि there is good but there is evil as well. Of course, both exist, but to this extent I didn't know. And then of course October 7th happened, and I was in the, like it happened with friends and family. तो फिर तब और भी वो कंफर्म हो गया कि लोग ऐसे कर सकते हैं. वैलिडेशन मिल जाता है ना कि पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग इन दैट वेज. कभी कभी हमें भी लगता है कि यार मे बी हमने ये पढ़ा है बट वी डोंट नो, इट कुड बी अ रॉन्ग नरेशन. बट देन जब आप एविडेंटली देखते हो चीजों को कि यार वो था और अभी भी ये हो रहा है, देन यू गेट अ सर्टेन टाइप ऑफ वैलिडेशन, राइट? हाँ, मतलब कंफर्म हो जाता है कि that people really want to wipe you off from the face of this earth, and it is not just like a far-fetched idea. Matlab people are actually manifesting that in real life. The visit is a little bit blurry because I went there a couple of years ago, but I remember this distinct memory. I have this very distinct memory. I see a heap of dirt and I don't know what it is. Itna bada, it's like a mountain-ish. And then they tell us these are ashes of Jews that were killed. And I was like, what? Because hamare mein we don't burn, we bury the body. So another way to torture the Jews was to burn the body. And then you see a heap of ash. And I was like, oh my god, this is crazy. Like seeing, like reading in history books and seeing it in person is very different. It's a different thing, very different. And I would really invite whoever is watching this podcast, whenever you have a chance, please go to Poland, because they have preserved whatever had happened. And एक बार अपने आँखों से देखिए before you make your क्या बोलते हैं कंक्लूजन और नरेशन. योर कंक्लूजन. अपनी आइडियोलॉजी बनने से पहले आप खुद ही एविडेंटली देखो व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड देन मेक योर आइडियोलॉजी. या अपनी सोच को तभी निर्धारित करो जब तुमने 10 चीजें उस तरीके की देख रखी हैं एंड देन यू हैव गॉन थ्रू दैट थिंग ना, एविडेंटली देख रखी हैं चीजें अपने आंखों से. हाँ जी, क्योंकि a lot of people were denying that Holocaust happened. And I'm like, ये proof तुम्हारे सामने, there is no तुम point of deny कर doing रहे हो. that.
So and There is no October point of 7th not only in Auschwitz. You know, I would just want to tell you, I visited one country. There also there was a similar. उन्होंने पूरा ऐसा showcase concept किया था. The people who were taken to Auschwitz. So before they were leaving, वहाँ पे उन लोगों को रखा गया था कुछ टाइम के लिए. तो that's what I have seen also. तो बहुत एविडेंट है वो. मतलब इट्स नॉट समथिंग कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो जानने के लिए. अगर थोड़ा सा भी आप जानने की कोशिश करोगे, यू विल सी एग्जांपल्स ऑफ दैट हैपेंड इन द पास्ट, है ना. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वाज हंगरी. सो हंगेरी में व्हेन आई इवन सॉ दैट, एग्जैक्टली, जब वो लोगों को जब ऑस्ट्रिच के पहले लेके जा रहे थे, तो बच्चों के छोटे छोटे जूते हैं जो वहीं रह गए हैं. एंड दे हैव प्रिजर्व्ड कि बिफोर दैट. तो ईच शू होल्ड्स अ हिस्ट्री, या है ना. मतलब वो एक एक ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है वहां पे, वो सिर्फ किसी का कोट या किसी का शर्ट नहीं है, या किसी का छूटा हुआ जूता नहीं है. वो किसी की छूटा हुआ इतिहास है जो अपने से उठ के आगे जा रहा है, और एक 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 बहुत ही खतरनाक जर्नी की तरफ है, जो उसे पता भी नहीं होगा उस टाइम पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ हिम और हर एक्चुअली. So there is no point of denying Holocaust. बट आप किसको इसको समझाओगे ना. इट्स लाइक यू नो इट, आई नो इट, some more people know it, but there are a lot of people who No, but the thing and the request is to watch yourself, to experience yourself, to educate yourself, है ना. वो वाली बात है. But I know it, वो बहुत अच्छा मोमेंट तो नहीं रहा होगा when you visited Auschwitz. तो being a youngsters, seeing, मतलब अडल्ट में जब वो चीज़ देख रहे हो आप कि यार, बिकॉज हम जब अपनी एक्चुअली 20s 30s में होते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा कूल होते हैं ना. मतलब ओके, इतना ज़्यादा गहराइयों को नहीं समझते शायद कई बार. बट जब ऐसी चीज़ें आप देखते हो अपनी आंखों से, तो ये वो थॉट प्रोसेस की तरफ ज़्यादा ले जाती होंगी कि नहीं यार, वी नीड टू डू समथिंग फॉर अवर कम्युनिटी, अवर रेस एक्चुअली, है ना. तो वहां से भी कोई इंस्पिरेशन मिली है क्या कि दैट्स हाउ यू स्पीक, यू सो ओपनली स्पीक अबाउट थिंग्स, ऐसा भी है क्या? It's built over time. It's not like it happened in one day or in one night. So it's happened over a period of years, and I felt like I had to. It was my moral response. I just felt like it was my moral responsibility to bring this to a wider audience, and why not? Because Exactly. I would, at least I feel like I want to stand on the right side of history. But there are a lot of people who do not have the tools and the information to actually know what's happening. Again, I'm not saying ki bhai sab log brainwashed hai. People generally do not have that information and might start believing the other narrative. So I want to be able to bring that and say कि भाई ऐसे भी है, अब बैठ के सोचिए, देखिए, like think about it, let it spark some curiosity, dive deep into it. So that is something that I wanted to do. And and also, like, my content is more India Israel related. I feel like as Indian people we're also misrepresented, misunderstood, stereotyped a lot. So I also wanted to debunk that, and I thought it goes hand in hand. So why not? Because India and Israel are two ancient civilizations, but also like very misunderstood. So I was like, you know what, let's just, and my identity is an Indian Jew, so it just felt right to bring that to the audience. And believe me, you are doing a great job on that part. Matlab, when I saw your video, not knowing you in person and then watching your content, मुझे बहुत relatable लगा कि यार what amazing work is she doing. Okay, थोड़ा सा lighter मोड की तरफ आते हैं रेविताल. अभी ये, और बिलीव मी दिस कन्वर्सेशन, मतलब ये मैं खुद भी सोच रही थी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. एवरीबडी शुड लिसन एंड एवरीबडी शुड रियलाइज. सुनना और उसको महसूस करना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, और वो भी प्रैक्टिकल लेंसेज से. पढ़ाई बातों से नहीं, किसी का खुद का तजुर्बा सुन लो, वो ज़्यादा एडुकेट करेगा आपको. आई फील इट दैट वेज. बट कुछ ऐसी चीज जो मुंबई की बहुत मिस करते हो आप इजराइल में, कि यार being a Mumbaikar girl, I definitely miss this part or this thing. Wow, there are so many things I miss about Mumbai. Hands down, there is no city like Mumbai. Of course, Tel Aviv has its own charm. I would love to invite you and have a good time in Tel Aviv. It is a city to experience.
बट मुंबई का भी like अलग charm है. Like there's I definitely miss. I'm trying to think because now I'm a little more Israeli, so I have to like switch on my Indian brain a little bit. So you know when people say there's beauty and chaos, that's Mumbai for me. Mumbai. The different colors, Yeah. diversity, but people coming from smaller cities to Mumbai to, you know, chase after their dreams. I've never seen, maybe you can equate that to New York, but Mumbai is Mumbai. Mm-hmm. Mumbai ka, I Mumbai is think, Mumbai, right? and it was always like, खाना कहाँ better है, दिल्ली या मुंबई. I've tried दिल्ली का खाना, it's good, but जो मुंबई की जो खाऊ गलियां है ना, I don't think anybody can beat that. Israel में Right. है, there are some cow gullies, but it is not as OG as Mumbai. Like there are some shooks, you can go to Shuk is basically a market. Market में they sell, you know, these snacks and जो भी है. But Mumbai का अलग ही vibe है. Then the way we celebrate festivals in Mumbai, when I came to Israel, I was like, why is everything so mellow? Why is everything so toned down? Mumbai is like hardcore, you're overstimulated. Bhai, matlab, you know what I mean? The vibe is. Yeah, I get you completely. वो Israel में थोड़ा सा toned down है. I'm not saying it's a bad thing. I was like, ये इतना शांति से कौन celebrate करता है? Exactly. Even for me, it was a shock. I would like to share one experience of mine. Anji. When I came here, and then first Christmas came in Poland, when I was in Poland. I'm an Hindu, but irrespective if I am a Hindu, India में Christmas भी सब मनाते हैं. मतलब what do I mean to say is, you will go to church if you want that day. If not, decoration तो हर जगह हो रखा है. You will go to market, है ना? मतलब बहुत vibe है. 25th की ईव में बहुत वाइब है इंडिया में, है ना. इवन आई कम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, इंदौर में मैं रहती थी. दिल्ली में भी रही हूँ, बट इंदौर का मैं बता सकती हूँ. यू वोंट बिलीव, मेन चर्च के आगे पूरा सिक्योरिटी होती थी, बिकॉज इतने सारे लोग, एंड ऑल दोज हु आर विजिटिंग चर्च आर नॉट क्रिश्चियंस. दे बिलोंग टू एवरी कम्युनिटी एक्चुअली, है ना. और इंडिया में क्रिसमस मतलब सबका त्योहार है. इट इज नॉट लाइक ये टिपिकली बिलोंग्स टू क्रिश्चियनिटी. सब मना रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब लाल टोपी पहन रहे हैं. एवरीबडी इज वांटिंग देयर चाइल्ड टू बिकम सेंटा, है ना. सबका फोटो वोटो आ रहा है, वैसा वाला वाइब है. यहाँ जब मैं आई तो 24th ईव से ही एक्चुअली एकदम सन्नाटा यहाँ पे मार्केट्स में, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट, दे सेलिब्रेट दिस विद देयर फैमिलीज. तो उनका अपना एक अलग तरीका है सेलिब्रेट करने का, which was very different from my ideas of celebration of festivals. तो मैं सोचती थी यार कि यार क्रिसमस पे तो बहुत ऐसा होना चाहिए ना, एकदम पूरी वाइब है पूरा. फिर मुझे समझ में आया, नो, दैट्स इंडियन वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फंक्शंस. एंड जितने भी त्योहार हैं हम हमारे तरीके से मनाते हैं. जो हम बोलते हैं ना धूमधाम से मनाते हैं, वो एक्चुअली हम करते हैं इंडिया में. It's just not a thing here, or you know, Middle East. I can't talk for other countries. But Israel में there are some festivals that are like very well celebrated, but you celebrate more with your family. So तुम घर पे ज़्यादा रहते हो, या go to the synagogue where we pray. और जो हमारे community centers होते हैं वहाँ पे, but ऐसे रास्ते पे, you know, एकदम, हाँ, वो थोड़ा सा कम है. I actually get you, and every Indian who must be watching, उसको समझ में आ रहा होगा what you are trying to say. Yeah, I hope so. No. और ये वीडियो मेकिंग वाली प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई? यू वेंट देयर व्हेन ऑलरेडी कोविड हिट, राइट? हाँ जी. तो कैसे ये लगा कि यार वीडियो मेकिंग में आते हैं, यू आर, अब तो आप यूट्यूब पे काफी हिट हो. आई हैव टू से कि अच्छे तरीके से हिट हो. यू आर वेरी हिट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब. आई वुड से यू आर दैट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जिसने यूट्यूब को भाई क्रैक कर लिया है. तो ये कैसे शुरू हुआ, स्ट्रगल क्या थे, है ना, वो मुझे थोड़ा सा बताओ आप. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. मुझे तो लगता है और काम बाकी है करना. आई हैव नॉट रीच्ड वेयर आई फील लाइक आई वांट टू रीच, बट थैंक यू. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ वैलिडेशन फॉर द हार्ड वर्क आई पुट इन, सो थैंक यू. मुझे बनना था लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर. मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था आई वुड मेक कंटेंट ऑन इंडिया एंड इजराइल. आई डोंट नो व्हाट, हाउ यू कैन place my content as under which genre.
but like I wanted to be a lifestyle creator, vlog and like do those things. I'm not saying that's a bad thing or a good thing. I felt like that was my style. More fun maybe. More fun, live, serious content से हटके थोड़ा सा बहुत more lively and fun content. more lively and fun, and do what I wanted to do, which I think I'm doing right now, but it took me some time to get there. I started to do that. मतलब अच्छा चल रहा था, but it was not मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था और वो वायरल भी नहीं हो रहा था. So I think in the first year and a half I left. I was like, it's not working. Because pehle ki YouTube used to go viral in the first month or 6 months, and I had still not cracked it. Yes. Tabhi algorithm bhi alag tha. You need to keep those things in mind. And it was getting tougher because everybody was now trying to get on YouTube. So now it's competitive. So now your content had to stand out. So I left it for some time, but then for some reason somebody reminded me that I should get back to it. So I was like, chalo theek hai, let's try this one more time. Then I started to focus more on India-Israel content. So started to let's say take Israeli friends to eat Indian food. I started to do more food videos, but more India-Israel related now. Then I met a friend who is half Indian, half Moroccan, but born and raised here, Jewish. And she embraces her Indian side more. So we did a video together. So stuff like that. This is strange, but I mean, born and brought up in a different country, and then you are embracing. This is no, I mean, because यहाँ पे कैसा है ना, it's a melting pot. So you have Indians, Americans, Brits, Australians. So यहाँ पे you have inter-race marriages, right? अगर तुम as long as I think Indian families will relate. अगर बंदा या बंदी Jewish है, we don't mind if he's from this country. Yes. तुम्हारे religion का होना चाहिए. You know what I mean? Okay. So like that. Let's say an American married to a Moroccan, a Yemeni married to an Australian. ऐसे मतलब बहुत couples हैं यहाँ पे, ठीक है? So my friend who got her dad's Ben Israeli, Indian Jew, and her mom's Moroccan, but she loves her Indian side more, I guess. So she does a lot of Indian food videos, so we collaborated. So ऐसे करते करते I started to. Then I knew, okay, my focus is going to be India-Israel, और कोई India-Israel कर भी नहीं रहा था. Everybody in Israel, right? And it's a gap. I'm trying to educate more people. They focus more on the West because they think, and I mean there are a lot of American Jews also, so it makes sense. But I said India-Israel का काफी niche भी है, but opportunity भी है, which no one was tapping at the time. And I saw an opportunity, and I said I am India-Israel in a way. So why not manifest that into my videos? Right. And then you hit the right point. Thank you. Thank God. Otherwise, मैंने तो छोड़ ही दिया था. Then one second time I left, I was going through a big personal crisis in my life. तो मैंने सब छोड़ दिया था वो time पे. And then I got back to it, I think just before October 7th. September, August mein, I came back to YouTube and I started to make more content. And of course, because of October 7th, but natural, I think anything to do with Israel got a little more algorithm push because it was in the news trending. So I think my content got exposure. My old content got exposure and people started to watch more. They're like, oh my gosh, we didn't know Indian Jews exist. It started from there. Then I was like, okay, I need to make more content on Indian Jewish community, history, culture, Israelis going to India, Indians coming to Israel. That's how I started my क्या बोलते हैं? Video making journey. No, video making. जाने का time वो. More like viral content. If people want to, because I was making content before which was not going viral or which was not getting views, and I was like, what's the point? Because for a creator तुम कितने ही बोलो कि नहीं you are only competing with yourself, you need external validation, and your external validation
are your views and your engagement. Simple. And nobody wants to collaborate with you or give you sponsorship if you don't have those numbers. Simple. This is an ugly truth, but it is a numbers game. But truth. Yeah, I mean, तो मैं कितने भी सारे लोग ब्रांड से बात करी है ना, they will always ask for your followers, your engagement rate, and then तुम्हारा मतलब retention time कितना है, तुम्हारा audience कहाँ से है. That is mostly what they'll ask you. So that's how I started my upward journey of, oh, okay, now people are going to watch this, watch this, and then I started to interview people then. I'd never thought in my life that I could be a host of Moses in Israel, but which I am now. And I was able to I started to bring IDF soldiers. I started to bring Israeli ambassadors who served in India. I started to bring journalists. I just recently, because I recently interviewed Aditya Rajkol, who is researcher for... he was a research consultant for Dhurandhar, but who also has come to Israel and given news on the ground when the war is happening. Oh. You know, so I started to bring these personalities because I saw there was value, because the information they were giving was unique. Right. And then Okay. Anji, you were saying. Yeah, please continue. And then over time, I realized I had to share my story as an Indian Jew. And then it just naturally started to happen that people started to reach out to me saying that, can you tell your story as an Indian living in Israel? So that's how like how I reached out to you. And thank you for reaching out. I'm having a great time. No, me too. I'm having a privileged time. I would say great is a very less word. I'm having a privileged time. But now you have lived, I think, the flop and the hit journey. What do I mean to say? I mean to say कि एक समय पे फीलिंग आ गई कि यार हम हिट हो नहीं रहे हैं, और फिर हिट हो भी चुके हैं, है ना. दोनों जर्नी देख ली है यूट्यूब पे. तो 3 टिप आप दीजिए कोई भी बिगनर को, लाइक मी में भी, कि यार ये 3 चीजें तो आपको कंसिस्टेंटली याद रखना ही है व्हेन यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी. वाओ, ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया है आपने, because I still see myself as somebody who's a learner. Like I like to learn from people who... But thank you. See me, पहले चीज तो I feel I don't think that I've hit the peak. I'm on my way. I'm not there yet, but thank you because it gives me a boost. Second thing, even treat people the same way you would treat them when you were at either 3,000 subscribers or 3 lakh subscribers. Because everybody starts from scratch and everybody's putting plus minus the same amount of work that you have been putting. Right. Okay. Second thing, try and test and be patient. Because if I wouldn't have been patient, I don't think I would have been here. Of course, it took me also a few people to tell me ki bhai, get back to it. So you also need the right people. Surround yourself with the right people. Taki when you don't believe in yourself, they would, and they are going to push you in the right direction. And third, always be a learner, like I said. Because algorithm changes, technology changes, personalities will, new personalities will come and the old personalities will be there or whatever. But always be a learner because you don't know what curveball you're going to get. Right. I hope वो भी है कि टाइम भी बहुत चेंज हो रहा है ना. हाँ, अभी AI का आ रहा है. Perfect actually. अभी AI भी है, so now you have to like be in tune with what's happening with AI and integrate that into your content. So always be a learner, even if you hit 100,000 or 1 million is what I'm saying. Yeah. Rightly said actually. मैं एक दिन राज शमानी को पढ़ रही थी या सुन रही थी, I don't know where he said this or he wrote this, but he wrote a very good line कि मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ती थी गेस्ट को लाने में जब मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर थे वर्सेस जो मैं जितने आज है. इट मीन्स कि हार्डवर्क कम कभी नहीं होता, वो तो आपको कंसिस्टेंटली लगाना ही है, पुट करना ही है अपने काम में. तो पेशेंस से बस काम करते जाओ एंड जस्ट बी अलर्ट कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. रिफाइन कर लो अपने आप को टाइम के साथ. दैट मेक्स मोर सेंस. ओके, तो कभी इंडिया वापस परमानेंटली शिफ्ट होने का आइडिया है या नहीं? परमानेंटली का तो पता नहीं अभी. आई डोंट हैव एन आंसर फॉर इट. आई थिंक आई एम हैप्पी वेयर आई एम,
बट हम ट्राई करते साल में एक बार, तो आई हैव टू गो फॉर माई सोल. I need to go to my Desi people and to the place that has born and raised me. I become very homesick if I don't visit. And once a year तो मतलब लगता ही है. तो अभी के लिए let's hope that. But I'm hoping I'm able to do more content, more business, ताकि I get a chance to visit India more. More often, yeah. I invite you to Poland. Whenever you would like to come, please come to my home and feel like you have a home in Krakow city. And if you come to India and I also come to India at the same time, so I wish कि हम कभी मिले, and I would like to meet you in person. I would be very happy to do that. Thank you so much. Wow, this was a great conversation. And of course, you're also invited to Tel Aviv. आपको मैंने पहले ही दे दिया था invitation. And I really hope this, settles down, ताकि we can move on and fly to other countries. And India में तो मिलेंगे ही. मतलब I've always told everybody who I've spoken to कि ऐसा एक time आएगा where I'm able to physically meet you in person. If it's not in Israel, not in Poland, in India for sure. In India for sure. But before we end up this conversation, Ravital, I would like to know your one message to all the Jewish people listening to you and all the people around different communities who are listening to a girl who is trying to bridge gaps between societies, who is living the harsh reality of this all war crime things and all what is happening in the world. एक message जो आप बहुत साफ शब्दों में अपना देना चाहते हो, it would be a privilege to know that. बहुत heavy question पूछ लिया आपने, अभी मुझे सोचना पड़ेगा. No, just give it simply. I mean, what comes naturally is the best thing, I feel. I think okay, so let me break this down because I think to my Indian audiences who are watching me, like, this is our century. Like, be proud of your identity. This is one of the best cultures and the best identity to have. Whatever the rest of the world might say, this is our क्या बोलते हैं, our shan, our pride. So be confident in your identity. This is our century. For the Jewish people, I want to say that we might think that the world is against us, but I can say with experience that there is a country in the East that supports us and wants to learn more about our culture. So please be open to sharing your experiences, because only then that is going to help bridge the gap of awareness. And for people who want to be a bridge, like how I am doing it in action, do it. Don't overthink, because sometimes you're like, मैं ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगी तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना. Do it anyway. Okay, the results will come over time. It might take some time and patience and energy and blood, sweat and tears, quite literally, but it'll be worth it one day. So do it. Very nicely put into very few words. Actually, I knew this thing कि ये question मेरा बहुत बड़ा स्कोप है इसमें आंसर देने का. मतलब फ्रॉम वेयर विल यू स्टार्ट एंड वेयर विल यू एंड, बट आपने बहुत ब्यूटी के साथ इसको कुछ शब्दों में रखा, रविताल. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. एंड जस्ट अ लास्ट मैसेज फ्रॉम मी टू यू. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द लास्ट एंड लास्ट. वी विल बी इन टच, बट in this podcast or in this Samvad last, I'm kudos to you, girl. I mean, you are doing a very great job, great job. Where people are talking about divides, you are talking about connections, and I see it that ways. And I hope everything goes to normalcy. और normalcy के पास ही बस नहीं जाना है, with a better understanding कि यार ये गलत था, ये सही था, let's go towards better things. And I hope all the situation goes to normal things and you have a better and each day better life and better version of yourself. Very good luck for your journey, and you're already, I see you in a very good way, and I look up to you, especially in this video creation. And to be honest, this is like an emotional conversation which I had with you, and a very realistic conversation. Thank you for doing that. And I cannot thank you enough from Brisha Samvad team. And just consider thank you एक शब्द नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी भावना है which are not delivered by the words.
सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संवाद में आने का। आपकी भावनाएं पहुंच गई है थ्रू द कैमरा, so don't worry. Kudos to your team for Yeah. being so patient and supporting your channel, because I know you need really good, like I said, surround yourself with people who support you and see your vision. So I think you're on the right track and I wish you all the best. हार नहीं मानना कभी, and of course I'm always here if you need any tips and tricks or just words of inspiration. आज के संवाद से मुझे महसूस हुआ ज़िंदगी को देखने के लेंसेज बहुत अलग अलग हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं लाइफ में। हमारी कोशिश है सिर्फ हम अलग अलग नज़रियों को टेबल पे लेके आएँ, आपको दिखाएं और हम ये समझने की कोशिश करें कि लोग, देश, दुनिया, सोच अलग अलग तरीके से चल सकती है और सब एक साथ अपने आप में सही हो सकते हैं। ये छोटे से मैसेज के साथ मैं फिर से विदा ले रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिशा संवाद टीम, अनुभि दुबे, एक प्रॉमिस के साथ कि फिर से हम अच्छा कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट आपके पास लेके आए हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा अच्छे से अच्छे गेस्ट को रीच आउट करने में और अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने में। थैंक यू।